Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Jadhav. Good morning, Baloda, good morning, sir. Very good morning. कितने लोग ज्वाइन कर गए हैं? सर 84 आ गए अभी तक. अच्छा अच्छा अच्छा. Good. And you have brought many people who have really very good expertise. I can see Dr. Sharma on screen with typical Nepali cap on the head. Good morning to you. Good morning, sir. So you can recognize from which state he is. Yes, now we Good can morning, take sir. questions. Good morning, sir. Good morning. हाँ सुशील क्या? How you are? Fine, all well, sir. अच्छा good. Sir, good morning. हाँ good morning, Dr. Baloda. अभी सर अप्रोक्सीमेट 100 तो हो गए. थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, फिर मंत्री जी से बात करें. अच्छा अच्छा ठीक ठीक. Dr. Bhagirath Chaudhary. Sir, good morning, sir. Good morning. How are you? Very good, sir. Thank you so much for the opportunity. It's a very timely program. You find always some opportunity there, है ना? Thank you so much. हाँ. Bhagirath, good morning. Sir, good morning, sir. Good morning. How are you? क्या बात है? कोविड का असर है. शकल सूरत चेंज होती आ रही है. क्या बात है? Very unique personality. No, it's all because of lockdown Looking very effect. Oh yes, it is. Yeah. I'll be with you soon, sir, in next 2 days' time. Great. Yeah. Dr. Saroj, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all. Good morning. Good morning, sir. Good morning to everybody. Myself, Dr. A.K. Pandey from Pantnagar. Good morning. Good morning, Dr. Pandey. Very good morning.
आपको दिखता है ना मैं माइक में दिख रहा है क्या? आपका माइक शेयर नहीं हुआ क्या? होता है सब चल रहा है। तो डॉक्टर पठे तो आपके आपके मार्क्स की वजह से पहचान नहीं पा रहे हैं आपको। नमस्कार। ले आए उनके यहाँ से दिल साहब से ले आए हो मेडिकल मेडिकल कल नहीं जाएगा बल्कि बहुत सुबह होता है उनको बोला था रूप जी को बोला रूप जी को भूल जाते बोलने से शाम को मैंने रूप जी को बोलने लगी बैठिए। हाँ भेजिए। मेरे पीछे आ जाएगी। एक मिनट शेयर कर। चेयर लगा दो इधर। उन्हें इसमें वो है क्या बेटी चल गया हमने सर करें स्टार्ट कर। हाँ करिए। मंत्री जी आ सुरेश गए। जी। अच्छा ज्वाइन कर। हाँ सर वो मेरी बात करनी तैयार है मंत्री। अच्छा अच्छा चलिए ठीक। सुरेश जी कर दें स्टार्ट। हाँ करिए शुरू करिए। ठीक है।
good morning to all. Welcome on the behalf of the SKN Agriculture University of all the delegates participating in the small science by the SKN region management for the at present position. The locust is in very severe condition, particularly in Rajasthan. On behalf of our Vice Chancellor, they have pathway to try to develop the some risk management tactics. We have tried to develop some things. So welcome again all the delegates, especially thanks to the Honorable Minister of Agriculture Lalchandji Kataria sir and all the senior delegates. We will start. First of all, I invite my Honorable Vice Chancellor J.S. Sandhu sir is the most dynamic, most creative and most supportive Vice Chancellor, and they serve in the SKN Agriculture University in the good way. So first of all, I invite our Vice Chancellor sir for the welcome address to the delegates. Good morning to all. I welcome all of you in this webinar, and particularly I first of all our respected Honorable Agriculture, that Animal Husbandry and Fisheries Minister for Rajasthan Sarkar, श्री लालचंद कटारिया जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उन्होंने हमारा आज के वेबिनार के लिए आग्रह स्वीकार किया और आज के चीफ गेस्ट के रूप में और हमें मार्गदर्शन के लिए उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। और इसके साथ वो हमेशा हमें इस कार्य के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी वैज्ञानिक गोष्ठी हो जिसमें विचार विमर्श हो और हम आगे इसको लेके बढ़े। इसी के साथ साथ जो डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री नरेश पाल गंगवार साहब, जो डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, उन्हीं के साथ में श्री ओम प्रकाश जी जो एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और उनके सारे सहयोगी डॉक्टर सुवालाल जाट को भी मैं देख रहा हूं, जिनको मैंने टिड्डी कंट्रोल करते हुए वहां पर रात में देखा था, तो आज उनको यहाँ पर देख रहा हूं। और पूरे डिपार्टमेंट को मैं पुनः स्वागत करता हूं। इसी के साथ में हमारे जितने भी मेरे सहयोगी वाइस चांसलर हैं, उदयपुर यूनिवर्सिटी से हमारे डॉक्टर एन.एस. राठौर साहब, जोधपुर से डॉक्टर बी.आर. चौधरी साहब, और कोटा से डॉक्टर डी.सी. जोशी साहब, और हमारे बीकानेर से डॉक्टर आर.पी. सिंह, उनका मैं स्वागत करता हूं कि उनके सहयोग से हम जिसको से वेबिनार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो राजस्थान में आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट हैं उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर ओपी यादव जी, और वो जोधपुर कादरी के डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इसी प्रकार बीकानेर जो हमारा CIAH हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है, उनके डायरेक्टर डॉक्टर पी.एच. सरोज हमारे साथ हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ जो आज की जिसकी मीटिंग हम करने जा रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, और उनके व्यूज हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसमें मैं विशेष तौर पर अगर नाम लूँ प्रोफेसर हरिचंद शर्मा जी, जो एक्स वाइस चांसलर अभी वहीं से रिटायर हुए हैं, उनका टर्म पूरा हुआ है। जो वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है सोलन, और उसके पूर्व वो इंटरनेशनल वैज्ञानिक क्रिसैट में रहे हैं, और मेरा उनके साथ लंबा काम करने का अनुभव है। वो भी क्योंकि उनका जो इस विषय पर जो आज के लोकस्ट है उनका अपना अनुभव है। इसी के साथ साथ जो और हमारे इसमें एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर एस.एन. सुशील, जो एक्स प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर भारत सरकार रह चुके हैं, और अभी जो है एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च में काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरे बहुत ही जंग और डायनेमिक साइंटिस्ट के रूप में उभर रहे डॉक्टर भगीरथ चौधरी, और क्योंकि दिल्ली में रहने से इनके साथ भी काफी काम करने को मौका मिला, और
ये अपने आप में एक अलग सोच रखते हैं। इन्होंने अपनी पूरे इस विषय पर पकड़ बनाई है। तो श्री भागीरथ चौधरी साहब राजस्थान के रहने वाले हैं, जोधपुर से बिलोंग करते हैं, और ये भी लुकास से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और क्योंकि ये स्ट्रेटजी का रूप में हम इनको आज उन्होंने इस सब्जेक्ट पे बोलना है, और इनका अपना इसमें अभी अनुभव है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ और हमारे वैज्ञानिक हैं जो NBAR है, वो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर वत्सलम, और वो आज की इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं। इसी के साथ साथ जो डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर है जो गुजर साहब, जो जोधपुर में तैनात है, और जो हमारा PPBQS जो मिनिस्ट्री का पार्ट है उसके वो डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनको क्लोज से इस समस्या को देखा है, और इस तरह से, और मिनिस्ट्री से हमने आग्रह किया था डॉक्टर SK मल्होत्रा साहब को, कमिश्नर साहब जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने हमें कहा था कि उनके जॉइंट सेक्रेटरी श्योर हमारे बीच में आगे होंगे, ज्वाइन किया होगा। उनके व्यू भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन इसमें लेना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और हमारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट जो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, जहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी इसके साथ में जुड़े हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और टुडेज मीटिंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वन साइड हम कोरोना से पीड़ित हैं, दूसरी तरफ पिछले जनवरी से अब तक इसके जो लुकास्ट के कितने स्वार्म आ चुके हैं। और जनवरी की बात करें जहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर था तब ये आया, अब ये 40-45 डिग्री है तब आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, कितना स्ट्रांग है उसके पर विजय पाना। तो उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास जो अप्रोच है स्ट्रांग है, उसको हम काम कर रहे हैं। पर लेकिन धीरे धीरे उसके साथ में हमें कुछ ना कुछ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आनी पड़ेगी। एक अप्रोच से मुझे नहीं लगता है कि हम उसको 100% कंट्रोल कर पाए। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस अप्रोचेस इज रिक्वायर्ड। उसमें कन्वेंशनल भी हो सकती है, नॉन कन्वेंशनल भी हो सकती है। इस तरह से मैं आज हम इस मीटिंग का, वेबिनार का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इस लुकास्ट मैनेजमेंट के एंगेज में लेकर आए, और ताकि जो है एक हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ हो मिलकर उनको एक और सहयोग दें, और इसको जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है उसको हम कैसे बच सकें। इसका दूसरा पार्ट ये है कि हमारे पास हम एग्रोकेमिकल से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। उससे डेफिनेटली हम कंट्रोल करना है, क्योंकि इंसेक्ट इतना भारी नुकसान करता है, उसको कोई ना कोई हमारे पास मीन्स होना चाहिए। पर एग्रोकेमिकल्स दूसरी तरफ उसके जो पीछे उसका रेजिड्यू रह जाता है, क्रॉप पर रह जाता है, हमारे वातावरण में रह जाता है, उसको जरूर वो नुकसान करता है। उसको भी सेफली हम कैसे हैंडल करें। तो इस तरह से आज का वेबिनार हम ये सोचेंगे कि एक स्ट्रांग मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। हम सभी जितने हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उनको मौका देंगे कि आप अपनी बात जो है वो रखें, ताकि हम एक स्ट्रांग स्ट्रेटजी लेकर आए। और क्योंकि पिछले 5-7 दिन में जॉबनेर में पहली बार 30 सालों के बाद पहली बार यहाँ के लोगों ने इसको लुकास्ट को देखा है। और कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबा मैं यहाँ पर आधा घंटा उसको देखता रहा कि जैसे वो उड़ के जा रहा था। तो समस्या बहुत गंभीर है, और उसके विषय में चर्चा विभिन्न जगह पर हुई है। पर लेकिन हमारी जो अप्रोच बड़ी एक स्ट्रांग अप्रोच और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लेके आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं हमारे माननीय मंत्री जी का और बाकी सभी जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, मेहमान हैं, जो आज सब्जेक्ट पे बोलना है, उन सब का पुनः अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि आज का जो वेबिनार हम एक अच्छी तरह स्ट्रेटजी बनाकर डिजाइन करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब
अब हम हमारे माननीय मंत्री जी, किसानों के हितैषी, किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हमारे ऑनरेबल लालचंद जी कटारिया सर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आमंत्रित करता हूं। उसके साथ साथ एक हमने छोटा सा प्रयास कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। एक हमने फोल्डर निकाला है जिसमें फार्मर्स को दिया है कि टिड्डी का प्रकोप कैसे होता है, कैसे हम उसको नियंत्रित करते हैं। एक छोटी सी अप्रोच की थी हमने, उसका विमोचन भी मंत्री महोदय के हाथों से होगा। तो मैं गढ़वाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनका विमोचन करने के बाद में बोस के पास कर। आवाज वो कर दो। ठीक है, आ रहे अपने फोटो दिख रहा है? धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं हमारे मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो ओपनिंग रिमार्क्स में 2 शब्द कहेंगे। मंत्री महोदय। सभी को नमस्कार। गूगल मीट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सम्माननीय कुलपति महोदय, प्रमुख शासन सचिव कृषि, कमिश्नर एग्रीकल्चर, सभी कृषि वैज्ञानिक, समस्त कुलपतिगण और विभाग के सभी अधिकारीगण, आज गूगल मीट के माध्यम से टिड्डी दल के बारे में और टिड्डी का जो प्रकोप प्रदेश और देश में बढ़ रहा है उसके बारे में कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति साहब ने जो पहल की है और जिस प्रकार का प्रकोप टिड्डी दल का लगातार किसानों पे बढ़ता जा रहा है, उससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चिंतित है। आप सभी वैज्ञानिक गण मौजूद हैं। मैं कृषि मंत्री होने के नाते प्रदेश के किसानों की तरफ से कह सकता हूं कि हम टिड्डी को मारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार टिड्डी दल की मीटिंग लेते रहते हैं कि कैसे इसका खात्मा किया जाए। हमारे अधिकारी गण रात और दिन मेहनत करके टिड्डी को मारने का, भगाने का काम लगातार कर रहे हैं। भारत सरकार का सहयोग भी इसमें लगातार मिल रहा है। पर उसके बावजूद भी कोरोना के साथ में राजस्थान प्रदेश में पिछले जनवरी से इसका जो प्रकोप बढ़ा है और इस बार की जो चेतावनी संगठन ने दी है वो काफी तकलीफ है। और मैं ये मान के चलता हूं कि इस प्रकार से लगातार टिड्डी दल का आना, जैसा कि अभी कुलपति महोदय बता रहे थे कि टेम्परेचर चाहे सर्दी का मौसम रहे, चाहे गर्मी का मौसम रहे, चाहे बरसात का मौसम रहे, टिड्डी दल पे किसी प्रकार के किसी मौसम का असर नहीं हो रहा और लगातार टिड्डी दल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। किसान इससे बहुत ज्यादा भयभीत और चिंतित हैं। गत वर्ष जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर, पाली, ये कई जिले टिड्डी की चपेट में थे। थोड़ा बहुत हमला उन्होंने गुजरात में किया। इस बार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये राज्य भी साथ में हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि वर्तमान समय में जो कीटनाशक और जितने भी संसाधन हम काम में ले रहे हैं उससे निश्चित तौर पे हमें कुछ मात्रा में मारने का काम कर रहे हैं। किसान भी जागरूक हो चुके हैं क्योंकि मीडिया के माध्यम से और इतना प्रचार प्रसार लोगों को भी जागरूकता आ चुकी है कि किसान भी जहां टिड्डी बैठती है वहां चाहे गांव के जनप्रतिनिधि हो, किसान हो, सब इकट्ठे होकर उसको भगाने का, मारने का काम करते हैं। पर मैं आप सभी वैज्ञानिकों से अनुरोध करूंगा कि गूगल मीट के माध्यम से जो भी देश और दुनिया का ज्ञान आप लोगों को है उसमें यदि कोई नवाचार अपन लोग कर सकते हैं सब मिलके, तो इसको दुनिया के देश भी देख रहे हैं,
हमारे केंद्र की सरकार भी देख रही है और हम लोग भी देख रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो ताकि इस टिड्डी से हमें मुक्ति पा सके। क्योंकि एक तरफ पे अकाल की मार पड़ती है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, उसके साथ साथ में पूरी दुनिया में कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना का जो महामारी का प्रकोप चल रहा है, उसके साथ में ये जो टिड्डी का प्रकोप आया है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय है और किसान के लिए पीड़ादायक है। तो मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि आपका जो अनुभव, आपकी शिक्षा जगत की जितने भी नवाचार की कोई बुक्स हो या सोच हो या हम नया कुछ कर सकते हैं, निश्चित तौर पे इस मीट के माध्यम से मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे जो जय संधू साहब हैं, जिनसे मैं लगातार संपर्क में रहता हूं, अन्य हमारे कुलपति महोदय हैं, उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है, और मैं ये चाहूंगा कि आज की इस मीट में ऐसा कुछ नया निकल के आए कि हम टिड्डी दल का ये प्रकोप है इसका सामना कर सके और दुनिया के सामने एक नई पहल करके टिड्डी को मारने का और भगाने का काम हम कर सके। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं सभी वैज्ञानिक गणों को, कुलपति महोदय को, जो भी इस मीट में भाग ले रहे हैं, उन्हीं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद सर। हम भी एक कोशिश, एक एसकेएनयू के द्वारा, आप जितने चिंतित हैं उतने वैज्ञानिक गण भी चिंतित हैं, और हम इस इंसेक्टिसाइड के अलावा आज की मीट के द्वारा और आगे हम प्रयासरत रहेंगे कि आपको कोई ऐसा आईपीएम स्ट्रेटजीज हम दें जिससे इस टिड्डी को हम ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर एच.सी. शर्मा सर। एच.सी. शर्मा सर अपने आप में बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं एग्रीकल्चर में। He is the ex-Vice Chancellor, YSP University for Horticulture and Forest, Naini-Sholan. International scientist, also work on the acacia in Andhra Pradesh. He is the visiting scientist from the US and also work in the Department of Primary Industries in Australia. He have received lot of awards and lot of work in agriculture particularly. So I invite Dr. S.C. Sharma sir. On topic is the recent advance in the management of locust. Dr. Sharma sir, please. Good morning to you all. Honorable Minister of Agriculture, Shri Lalchand, the Vice Chancellor of the Agriculture University in Rajasthan, Dr. Sandhu Rathore, and the rest whom I have not. The Director of the Agriculture ICA Institute of Rajasthan, the statutory officers of the University of Rajasthan, my friend Dr. Bhagat Chaudhary, ladies and gentlemen, good morning to you. Although I have probably not worked with Locust, but that's what we have been reading in the BSc Agriculture 50 years back in 1970. Locusts are not a problem of one country. They are they start from the Sahara population. Sir, it is not properly audible. It is not properly audible. Organizers should ask others to mute their. Okay. So that just start in the Saharan Desert in West Africa, and then they move to Kenya, Ethiopia, Sudan, Eritrea, and the populations multiply. They move on Arabian Peninsula and Iran, and it is Iran and Pakistan. The populations that multiply there, they move on to India. Now, why we got so many swarms or immigrant locusts to India over a long period of time? This is largely because of climate change. Because last year we saw
prolonged rainy season, and then we also had more than normal winter rains, which resulted in production of food locusts. So they multiplied it. And when the population is very low, they change from a solitary to gregarious state. That's what this one. Now, this is a few things about the biology movement of the insects. But to control the locust swarms, most important thing is international collaboration in monitoring of the development of the hoppers, the breeding grounds, because when the hoppers emerge from the pods, they first feed for the first moving star on the ground, on the grass, and only when they become adults or they get fully expanded wings that they form the spawns under population. So the control of yes is much more आवाज साफ नहीं आ easier. रही है सर. Now can you listen? Is it okay? सर थोड़ा सा आवाज साफ नहीं आ रही है सर, थोड़ा सा नेट को देखें. Well, I get a lot of echo. I think there are other people who are also not switched on. Anyway, so the most important thing is to control the hoppers when they're up to the full star. And for this, international collaboration under the auspices of FAO is most important. And this international collaboration is in place since 1945 when the locust control kind of a group was formed between African, Arabian, and of course Iran, Pakistan, and India. But because of the international disturbances or lack of collaboration probably in monitoring the movement of these locusts, that's where we have the problem today. So once the swarms are formed, then we have two things at hand. One is to kill the swarms wherever they settle at night. They largely roost on tall trees. And two is to protect the crops which are valuable or are vulnerable to the locusts. So to kill the swarms, I think the most important thing is to kill them when they're roosting in the evenings on trees or bushes. And for that, we can use, we have to use insecticides like malathion or some of the pyrethroids that are effective, and yet they have low persistence whose residues dissipate in a matter of 2 to 3 days. Another aspect is to protect the crop. The locusts do not feed on neem, and this knowledge was there among the Indians since 1938. You know, a book on entomology written by Hem Singh Pruthi from the Agriculture College. Of course, then it was Lalpur. Later on, it is PU Ludhiana. And a lot of work later on by Dr. S. Pradhan and Dr. Jotwani and colleagues at IRI Delhi. And also Dr. B.S. Parmar, they have worked on the antioxidant and growth inhibition properties of neem. And this is the most effective natural pesticide against grasshoppers. And if we have this neem seed kernel extract or the neem leaf extract or the neem oil formulations available, we can advise the farmers to spray these
crops whenever we have a imminent kind of a onslaught of the locusts. But another thing is to have a long-term planning is to kill the locusts in their breeding grounds. And that we can do by using some of the, we call them entomopathogens, like one is Metarhizium supply, and another is a specific protozoa called Nosema locusti. And for that, we need a time to prepare to multiply these pathogens, and they will be most effective when they are sprayed on the early instars, first and second instars of the locusts or the grasshoppers. And that is where a very fine kind of a niche-based or the region-based planning is needed, that when we knew that the locust swarms are coming, say from Iran and Pakistan, then we can alert our public and private agencies to start the production and multiplication of this Metarhizium and Nosema. And we can spray these biological control agents wherever we have the breeding grounds. The locusts and grasshoppers, they lay their eggs in egg pods in the sandy soils. Is to scout for the emergence of these nymphs and then spray these biocontrol agents in the early instars so that they can cause infection, and then the infection spreads in the population. So what I'm saying is we spread a COVID among the locust populations. And that COVID for the locust is Metarhizium and Nosema, which is called a protozoa or microsporidia. Another thing is we can also turn this endemic situation into opportunity. We can also collect the grasshoppers in large numbers. One is grasshopper or locust legs are used as a kind of a preferred food by certain communities internationally. And two, we can also mix them in the animal feedlots so that the animals get more of a protein. It will virtually do the same thing as is done by the mustard seed cake or the cotton seed cake, which we feed to the cattle. We can also blend the animal feed with the locust and then make it more nutritious. One of the major problems with the locust had been that these pandemics, they occur in a cycle of about normally 7 to 8 years. Sometimes it takes 15 years. I had seen locusts in my childhood in 1965 in Himachal Pradesh in Bilaspur. That's where I belong to. Around 65, 66, and we used to beat the drums or the plates or the things, but beating the drum is not that much effective. You beat the drum in the field and the locust will kind of fly from one plant to another or one place to another. It basically doesn't control the locust. The most important thing is to maybe collect the leaves or fruits like the neem fruits, neem seed cake, maybe get their extract and then spray it on the crops. Soak these things, like it will not feed on pine needles, for example. Of course, you only find them in Himachal, but it doesn't feed on neem. And there is another plant called drake, which is a close relative of neem. It is called Melia ajadrake, and then it doesn't feed on tuna as well, Tuna indica. So whatever trees the locusts are not feeding, we can collect their leaves, we can soak it in water overnight, and then of course add some liquid soap, and then that can also be sprayed on the crops. Most important is to have a long-term continued research and extension activities
on these major issues. We begin to talk about these issues when we have a problem. And then we have some money to do some research, to do some extension, but the day problem is not there. The scientists don't get any money to carry out that long-term research about their behavior, about multiplication of the population, and of course, the migration, under what situations, under what conditions the locust will multiply in large numbers, and in what conditions they will form swarms and move in what direction. So actually, we have to put the same level of emphasis and same level of effort on tracking, monitoring, and control of locusts as we place on daily weather forecasting. Because the locust swarms are also the formation, and of course the migration or the movement is also controlled by the weather conditions. So if we have a long-term strategy, and that integrated, what we call the integrated strategy, we can only have one if we are proactive, we have enough funding, and of course continued dedicated personnel to locate, and then of course develop a forecast model. We should be able to assess the immigration of or the locust swarms in India, predict the level of swarms in India when we have the locust swarms in East Africa, and that is in Kenya, Ethiopia, Eritrea, and Southern Sudan. If we can predict the locust swarms from that location, then it will take roughly 4 to 5 months for them to reach India. And if we pinpoint from there that we have an imminent locust swarm, we can start our preparation, both with the biological control agents, to educate the farmers, 3, of course, get the chemicals or insecticides and of course the drones ready. Wherever they settle first, we should kill them then and there itself. So these are a few of my thoughts on this issue. So thank you, Dr. Sandhu, for giving me this opportunity. It's very nice to interact some of my colleagues, both administrators and entomologists, and of course, if we all work in a collaborative manner within India itself, I'm sure we will be able to minimize the loss due to locust swarms to a minimum. Another thing we can keep in mind is that even if we lose 30% of the leaf area, it doesn't decrease the yield significantly. So this a bit of locust damage, in fact, can also do a bit of good, because that will also stimulate the production of secondary metabolites in the crops, and that will also inhibit other pathogens and insects. So thank you very much, and I will be eagerly waiting to listen to the people who are actually working on the ground. So thank you, and have a nice day. Thank you very much, sir. We have tried to incorporate these things you have to discuss in this meeting, and we have prepared a IPM tools for the management of this noxious pest locust. So in future, we have tried to incorporate all the things of like biological control, like predators, parasites, and insecticides, and we have tried to develop the new molecules also. Thank you very much, Sarmaji, for your valuable suggestions. Thank you. Next, I will invite Dr. S.N. Susil, is Satyananda Susil. Susil sir is the principal scientist in IISR Lucknow, Indian Institute of Sugarcane Resource. And Dr. Susil also work on the deputation of the Plant Production Advisor, Government of India for a lot of times, and he's also discussed a lot of discussion regarding the locust in India and abroad. So I'm invited Dr. S.N. Susil sir for the history of the locust outbreak in India. Please. Well, thank you. Thank you so much, sir. Am I audible? Am I audible, sir? Hello? Yes, sir. Am I audible? You are audible. Yes, Yeah. Dr. Badola, sir, am I audible? Yes.
Yes, go ahead, please. You are Thank you audible. so much. Thank you so much. Audible. Go ahead. Most respected Honorable Agriculture Minister Shri Lalchand Kataria sir, Vice Chancellor SKN Agriculture University Dr. J.S. Sandhu sir, all the Dr. H.C. Sarma sir, and all the distinguished Vice Chancellors, Principal Secretary Agriculture, Agriculture Commissioner Government of Rajasthan, Joint Secretary Government of Rajasthan, and all the directors of ICR institutes and distinguished scientists participating in this webinar. So thank you very much once again for giving me this opportunity. Well, I shall be presenting, maybe I'll sharing my slide. Yeah. Is it there? Is it with? Can I? Can you allow me to share slides? Yes, sir. No problem. Is it visible now? My screen. सुरेश जी इसको एक बार देख लें आप. Sir, just open your presentation and minimize the Google Meet screen. Okay. Is it visible now? No, sir. Not yet, sir. Yes, it is. Yes, sir. Visible, sir. Can you see the screen? Yes. The first slide, can you see? Yes, sir. It's visible. Go ahead. Desert locust crisis, status and rapid response in India. Okay, sir. Thank you so much for the inconvenience. Friends, this morning I'm going to speak on the desert locust crisis. As you all are aware, that desert locust crisis is a really like after COVID-19, which we are facing. So agriculture is the only sector which has actually performed well even during this period. But then because of the crisis of locust, so everybody is really in anxiety and also in apprehension and lot of anxiety. So what will happen? So, but then I feel that together we all will succeed and we will be able to manage this issue. So to begin with, this is as we all know, that's a international. It's an international transboundary insect pest, and its a distribution is, as Dr. Sharma was also mentioning, it's a very long stretch of Earth's land. It is damaging. So it is around 20% of Earth's land surface. And as far as this pest is concerned, it's a very old pest, a well-known pest. It was there in the Egyptian carvings also. It is mentioned about 5,000 years ago. Also, there is a mention in Bible and Mahabharata and also in Quran. So that means it is a well-known pest, and it can eat out anything and everything. It may be leaf or flower or fruit, seed, bark. Everything it eats out, and as per the report, that even a small swarm can eat an amount of food which is sufficient to feed 3,500 people. Just to give an idea how they are actually distributed, so this is the area you can see, the dotted line. This is the area we call it a recession area, where actually they breed. The area from the Southwest Asia, this part, the India, Iran, Afghanistan, in this area, and then this Middle East part, and then eastern part of Africa, and it goes even the western part of Africa, like Morocco and this area, Algeria. And then that means right from Atlantic Ocean till the Indian Ocean, rather Arabic Ocean, and even major part of India. This is the area where they actually they breed, and also they can invade in a further larger area that comes around 30 million square kilometer, covering around 60 countries. But then because of changing climatic condition, the situation may further, they may find some different niche and different areas.
in coming future. This is the something which we have the experience so far. And this is how all the countries are divided into different zones, like Eastern region, we are there. Then Central region, there are the Middle East countries and also Eastern part of Africa, and then Western region. And then these are the major species which are really creating problem. Like 10 species are important as far as the locusts are concerned. So desert locust, Bombay locust, migratory locust, Italian locust, Moroccan locust, red locust, brown locust, South American locust, Australian locust, and tree locust. By the name also you can make out some of the locusts are specific to Australian side and some are in the Morocco or some in the South American part. But in India, we have 4 major species: desert locust, migratory locust, and Bombay locust and tree locust. But among all these locusts, desert locust is the most important one and most damaging. Just to have a look on its life cycle in a very nutshell, these adults, they lay eggs in the egg pods. I will show the pictures later on. And in egg pod, in each egg pod, you will find, if they are in gregarious form, there are 2 forms, solitary and gregarious. By the name itself, you can make out solitary means they are solitary in nature. They don't go out much. But then gregarious form, they actually swarm, they move out. So egg wise, so 80 eggs in 2 egg pods as far as gregarious are concerned. So roughly 150 eggs they lay. While the solitary form can lay 2 to 3 egg pods, that means roughly 300 to 400 eggs. So egg period takes lesser time. So even if the climatic condition is good, within 10 days they will mature and the nymphs will come out. The hoppers will come out. Then initially they are white color, then brownish color, and then finally after 5 instars, 5 molds, they get converted into, there is a fledging. So that converted into the fledglings. Fledgling means here they are the immature adults. So from laying to fledging, it takes 40 to 50 days. But for adult maturation, it may take 3 weeks to 9 months. That means the fledglings, which the swarm which we are seeing, actually they are fledglings. They are immature adults. They are just searching food, and at the maturity they will go for egg laying. So then that means it may take around 2 to 4 months to mature. So by the time they keep moving, they keep feeding. So then they will find some place, some suitable place, that is sandy area, desert area, and with the good moisture, there only they will go for egg laying. You can see all these pictures. The gregarious form, just see the ovipositor, it is going in the soil. The soil means here sand. So deep in the sand, 5 to 10 centimeter deep, they will lay eggs. And these are the egg pod which I was talking about. And then you can see the beautifully arranged eggs. And then it is not that everywhere they will go and lay eggs. No, there are the set breeding areas. So the summer breeding takes place at Indo-Pak border, and also some parts of here in this Sudan, and some part of Eritrea, and then this is the area Sudan, and also Ethiopia, some part of Ethiopia, and here the Mali and Mauritania. So this is the area, the green color, the area where summer breeding takes place. Summer breeding takes place when from July to October. Now the after monsoons, the summer breeding will start. And then these are the area like India, Pakistan and Iran border, and little bit part of Afghanistan. That area is spring breeding or winter breeding area. And then some part of this Saudi Arabia, and little bit part of Yemen, and some part of this near Red Sea, at the bank of Red Sea. So that area, that is eastern part of Africa, and little bit in Horn of Africa, that is Somalia, and then some part here, this Algeria and Morocco, so and Western Saharan area. So this area, they actually breed during spring and also winter season. So you can see here, when they are the mature, they are the thing which we are, the swarm which we are seeing, they are immature adults, as I said earlier. They are pinkish color. But then the yellow color, you can see, they are the mature adults. And you can see the ovipositor, length of the ovipositor, and the eggs also.
Then these are the hoppers. You can see hoppers are this yellowish. They are mature hopper, and wing pad also you can see small wing. They cannot fly much. Only they can just jump and little bit fly is there. Very small. You can see here the swarm, the pink color swarm. Even sometimes the complete the tree, they are so heavy and large in number. The weight is so much that even the twigs are also broken. And you see the yellow color, these all adults, mature adults. So you can imagine how many egg pods they are going to lay, and then how much crowding would be there. So because of the crowding, maybe then the question comes in our mind: what actually triggers them to form a swarm? So there is a compound called glycol, which is in the gut due to breakdown of plant material and in presence of the bacterium Pentova agglomerans, they form a chemical that is glycol, which is something which is required for aggregation. Once there is aggregation, so there is a hind leg touching. There is a Burroughs paper. This paper came in the Nature. While this Burroughs paper 2011 it came, that hind leg, there is a touching of hind leg between the individuals and the smell and sight. So that also triggers them to form a serotonin, a chemical called serotonin in the brain. And because of that, they just tend to swarm. So then they get converted from solitary form to the gregarious form. So that means the swarming form. So now at this stage of time, they feel that there is a crowding, there is a dearth of food. So they tend to move out. So then now these are the plague situation. The plague here means plagues and upsurges in India. Plague here means when there is a consecutive years, year after year, when there are the large number of swarms are coming, we call it a plague. Otherwise, it is called as upsurges. So from 1812 to 1962, there used to be continuous plagues. But 1964 onward, in India, we had only swarms and upsurges. So only in 68 we had 167 and 1993 we had 172. And exceptionally last year 2019 we had 1500 swarms. So, and you all must be wondering, the last year not much chaos was there compared to this year, because this year it has moved beyond Rajasthan. It has gone to Madhya Pradesh and also to Maharashtra, some part of Uttar Pradesh and also Bihar and Chhattisgarh. So because of this, now a lot of talk on this, but then last year 1500 swarm came in Rajasthan. Reason being that they came after, most of them came mostly after monsoon. So a lot of greenery was already there. So not much movement for in search of food. So that's why they were restricted in the Rajasthan area mainly and Gujarat, and very little bit part of the Punjab they moved. And now this is the organization which is at the national level, which is responsible for the locust control. So this organization came into existence in way back in 1939. And that was Dr. Hem Singh Pruthi only. He was the first plant protection advisor to Government of India in 1946. So he merged that organization with the DPPQ, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage. And this organization is having 10 circle offices and one field station. You can see here. So 2 stations in Gujarat, one in Palanpur, other one in Bhuj. While other stations, 8 stations, Jalore, Badmer, Jaisalmer, Phalodi, Nagaur, and Bikaner, Churu, and Suratgarh. And Jodhpur is their field headquarters. And the central headquarters is at Faridabad. And at Bikaner, they have the field station investigational laboratory as well. So that organization is responsible for the research. So the basic work what they are doing is they are keeping constant vigil on the field surveys through field surveys, and in 2 lakh square kilometer of scheduled desert area. They avoid, and their job is to avoid upsurge of locust population in scheduled desert area, hold end-of border meetings, train the farmers and state functionaries for locust and staff and locust control, advise state functionaries and BSF personnel, Panchayati Raj institutions, issuance of desert locust situation bulletin, and conduct a field station, as I said, in field research on locust at FSIL. So this is the scheduled desert area, as I was mentioning, 2.05 lakh square kilometer. This is the gadget they are using. This LWO staff they are using for surveillance. So it's a real-time surveillance they are doing.
the whatever data they generate, it is sent to FAO. At the FAO is the headquarter for Southwest Asian Commission. So there they analyze the data using Ramses, that is the GPS, the GIS based software, and then they forecast, and they share with us all the forecast data. What is actually happening in Horn of Africa or part of Africa, what is happening in the Middle East. So all these are all what is happening at the Indo-Pak border, or what is happening at the Pak and Iran border. So all these data we get, and based on the data provided by us, they generate the forecast model. So this is the gadget they are using for surveillance. This is the another gadget, Locust 3G. These are some of the international obligations. Just I want to highlight here for understanding of everyone. So FAO is actually of United Nations is coordinating global locust control efforts. So there are three major commissions. So for Western region, there is CLCPRO, PRO, then for Central region, CRC, and for Eastern region, SWAC, that is Southwest Asian Commission. These are the three commissions to deal with the desert locust. And India is a member of SWAC since 1964. And then there is another one committee at international level, Desert Locust Control Committee, so which was established in way back in 1959. But we are also signatory to this arrangement, this committee from 1959. We are all the contributions we are paying for Southwest Asian Commission and also for DLCC. Under this international umbrella, regularly we are participating in the meeting and sessions of FAO and SWAC as well as DLCC. We are participating in joint survey program with Pakistan and Iran. And Indo-Pak joint border meeting is also regularly held during summer months. And we are also participating in inter-regional workshop which is organized by FAO. So these are the four countries which are partnered in Southwest Asian Commission: Iran, Afghanistan, Pakistan, and we are there. And through this, they are actually their major activity is the locust early warning and prevention system. So now coming to the management part, majorly the economic threshold level for this particular pest is 10,000 adults per hectare or 5 to 6 hoppers per bush. So, but then major reliance is still on the chemical insecticide. As Dr. S.C. Sharma was also mentioning, that this way back in 1962-63, the Pradhan's work is there, which says that the neem can be a very good repellent or antifeedant. And but before that also, in 1928, Dr. Chopra's work, that's the previous work, the first work is started in India by Dr. Chopra. So he reported that time the neem as a very good antifeedant. And 1962, when there was a swarm in Delhi, that time the fields of IRI were saved just by spraying the neem seed kernel extract. So that is something which can be used as a prophylactic measure. And then Metarhizium anisopoli, the variety Ectridum, and also Paranosoma locusti. These are the two entomopathogens, wonderful pathogens. But then so far it was not recommended in India, but now Central Insecticide Board and Registration Committee has given a label claim for Metarhizium anisopoli Ectridum for use in India. So let us hope that maybe in coming future, in near future only, we are going to use this Ectridum in the field. These are the traditional methods, looks are very traditional, but certainly they are very effective, and the farmers are using this method since long, and they are getting benefit. And these are some of the control campaigns which happened 93 onwards. I am listing just here for everyone's knowledge. That 1993 we were using BHC, dieldrin, malathion, and phenetothion. So the total area which was infested by locust was 3,10,482 hectare area, and you can just see the right side how much of pesticide has gone in. So much of BHC, and these are all toxic red level. Most of them are red level pesticide. So they are very, very toxic. They were used, but at the later course of time, at least malathion was used, then mostly malathion. So different years you can see small upsurges also, they were controlled by using pesticide, chemical pesticide. And 2016, there was, of course, I was associated with this program, Migratory Locust. It came in this Leh and Ladakh area, Kargil area.
So that time we could control very quickly. That was very less area also, 1,000 hectare only. So we could control by using chlorpyrifos that time. So that was the only pesticide available with the state government that time. So then after that, 2016, 17, not much problem. But then 2000, last year, there were 1900 swamp came. So 4 lakh hectare area by the LWO, it was controlled. But then state government and additionally 2 lakh hectare area, state government's control. So total of roughly 6 lakh hectare area was treated last year. So, but then till last year, we had only one pesticide label claim, that was the malathion, 96% ULV. But now the Central Insecticide Board and Registration Committee, Government of India, they have now recommended 11 formulations of pesticide which can be used in the cropped area against locust, and 4 pesticides. These are the pesticides. And of course, there is a diflubenzuron is also recommended. That is only for the hoppers because this is a chitin synthesis inhibitor. And then 4 pesticide formulation, they are recommended for the desert locust in the desert area only. This is the something data which was provided by to me by Locust Warning Organization. I think the people from Locust Warning Organization have joined, must be joining today this webinar. So this till yesterday, before yesterday, 55 swamps came into India through Pakistan border only. The Badmer, Sriganganagar, Jaisalmer, Bikaner, Fazilka, Falodi, and Kutch, and also Banaskantha district. And total 58 districts where this LWO staff, they could treat 1,15,000 hectare area. And then state-wise control by the State Department, if you see the 85,000 hectare area, if you club together, it's roughly 2 lakh hectare area already treated. And the locust swarms were controlled. So more than 78 districts are there. So more than 78 districts, I think, are already controlled by the both locust warning organization as the state government team. So these are some of the sprayers which are in use. So macro alva and then macro nears, which has a very good capacity, 40 hectare in 1 hour. This is very good, and they are mostly vehicle mounted only. The alva mast is 25 hectare per hour. These are some of the pictures from the desert area, how the people are actually spraying. And this is one good thing that this May month only, the Government of India has now taken a decision, DGCA, and also the Central Insecticide Board has taken a decision that now we will go for the aerial spraying. So drones are now recommended, even helicopters also they are going to use in coming future, maybe in coming days. And then this is for the area where actually the vehicles are not able to reach, and where the trees are very tall. So this is what I was talking about, what FAO is providing to us because of we are signatory to the international obligations. So we are getting all these data, forecast data. So last this December they gave this data that the Indo-Pak border there is a lot of swarm is now gearing up and they may move. And also in some part of eastern this Middle East and also the eastern part of Africa. But then January, you see, these whatever swarms were there at the Indo-Pak border, then in the month of Feb, they moved towards the west, not the east. Had they moved east, they will go certainly to our part only, the mainland area. But then they moved to east, and then, west. So west part they moved. But then in the month of March, you can see there is a lot of hoppers came in because of the previous spring good rains in the month of winter months and also spring months. So now you can see the hopper bands came in the month of March, and by April there were a lot of hoppers and also a lot of swarms generating. So then 30th of April, I think first week of May, they entered in our boundary. So you can see here they entered, and by this time already there are a lot of breeding going on. So in one generation normally 20 times, but the second generation as a solitary, if it completes the 20 into 20 means 400 times. So now you can imagine if the 2 generation once it completes, so 400 times. If there is 1 million, so it will get into 40 millions. So and then there is a crowding, then they will form a swarm. So in the month of June, very recently this data came. Maybe next picture I will be showing. Then these are some of the this forecast. They are regularly every week or 10 days they are generating. So that then here the June very recent last week only 20th June whatever they have given,
They predicted that from the Horn of Africa directly it may hit our boundary. But since if you compare the previous month, the 1 week, around 10 days, 7 days back, lot of crowding, but here it is thin. So that means because of the good control operations in the Horn of Africa, perhaps this has weakened. So this may not hit because 22nd June was the expected time of hitting to our boundary, but it didn't hit. So that means the population is already low, so it may not hit. But this area is certainly a matter of worry. But then since now the wind will be changing with the monsoon, so now the mostly easterly wind will be there because initially you can see the May, it was all easterly wind, it has gone quite deeper, maybe up to here Madhya Pradesh and also some part of Maharashtra also it was reported, even part of Bihar, it has reached. But now since the monsoon has come, so it may go towards the now it will go towards the west because the easterly wind will start, so it will go west and certainly they will go for breeding purpose at the Indo-Pak border. Now, some of the action plan quickly I just want to discuss that when pre-attack, what should be our action plan? So, all the equipment should be checked and all the vehicles should be checked, tested that whether it should be in working condition. Organized training to all the officials is very important. Mock drills are very important. Whether locusts are coming or not coming, there should always be a mock drill by all the state government officials and also the locust warning organization officials. And regular liaising with the LWO is very important with the state government and the LWO. Control rooms are established. We have to ensure at the state and district level, public awareness is created properly at the through electronic and print media, and district and village level committees are necessarily, it is very important to form committees and the conduct pre-treatment awareness campaign to the villagers. So, which I was talking about the mock drill. I think I am there in the picture when I was the plant policy advisor. So every year, whether this is the picture of 2016 or 15 maybe, but then that time also there was no locust swarm. But then mock drill was definitely we were ensuring that every year we are having the complete mock drill. So this mock drill is very important. Otherwise we may miss the time. Because it may come because sometimes there was a feeling like from 97 there was last year only it came. So in between also many of the state government officials, those were involved during 93 or 97, they retired. So that is why it is important to have a regular mock drills and then for the during the attack, what should be the action plan? So report on swarm movement and earmarked area, positioning of the control team at the control site, deployment of health officials is very important, reporting and receiving of the control data, compilation of field data like treated and mortality achieved, then control data and pesticide consumption review every day, then preparation of daily locust situation report and reprising to the locust situation to the competent authority on daily basis, daily review of progress and planning for the next operation, and ensure all open wells and water ponds should be covered with the materials, and also contamination with the toxic sprays to avoid. And then action plan for the after the treatments, that is equally important. So the create post treatment awareness is very important. Do not allow grazing of cattle, birds, or other public activities till the harmful effect of pesticide is not evaded. Do not harvest the fruits, and that awareness is required because minimum waiting period we have to wait, and then clean the sprayers, then only it should be kept in the stock. And then the mitigating the challenge, when we talk of the mitigating the challenge, it is not only the agriculture department, but there are other stakeholders. Their responsibilities are equally important and their cooperation is equally important, like Ministry of Home Affairs, there is BSF and other, and they are really helping. They are already extending help, but then their help is equally important. Ministry of Defense, Ministry of Earth Sciences for meteorological data, Ministry of Civil Aviation for air traffic control, Ministry of Communication for wireless communication, which we are using in those areas, especially the desert, scheduled desert area and the border area. Ministry of Information and Broadcasting for media and news coverage, department, and the state departments, government department for vehicle, pesticide, manpower, and of course the state government. They are shoulder to shoulder. They are working with the locust warning organization, and that is why we are able to manage this
crisis. And then state health department to administer the baseline, the sports choline stress test is very important, and then before and then after also. And there are medical toxicologists with the DPPQS. Their job is to coordinate with the State Department for choline stress test and awareness and do's and don'ts. And aircraft companies are also very important for providing the aircrafts and these drones and helicopters. And then pesticide manufacturing firms for providing the pesticides in time. Sushil sir, now, through time constraint. Yes, this is my last slide for coming to the future thrust. So, since this is a group of scientists, these are the few points which we can think of for research future on research front. So, utilization of satellite imagery and geographic information system for monitoring of locust swarm movement on daily basis. That is very important. Whatever data we are getting from FAO, it is based on the information which is provided by the department or by the Pakistan or any other country. So, but then on the real-time tracking of the swarm, I think through satellite, if we can do, that will be a really great service. Then management through behavioral control, like using pheromone or hormone. I was discussing about some hormones. Then search for isolate, the local isolate of entomopathogen and their utilization in locust management. Then utilization of resistant genes for a resilient plant species, which are in varietal breeding program, because there are few plants which are really resilient. The research and utilization of botanicals, like as we were discussing about neem, but there are many, Melia jeterec, and there are many other plants which can be exploited. So, and development of mechanical device which can effectively either repel, because the farmers are using some acoustic things, are beating the drums and all. But can we think of developing some machine which can really repel the if it is installed in the field, it can repel the locust, and also we can catch the locust if we can develop some machine. A new chemical, lot of new chemicals are coming and registered already. Roughly 295 or 96 pesticides are registered. So we can think of testing some of these newer pesticide against locust, and some of the administrative issues which we can give a thrust, like joint coordination committee with the states having recession and major invasion areas. So for better planning and management, and joint mock drills of locust operations involving all the stakeholders, state government, there's LWO and other stakeholders, and strengthening of LWO with more human resources and vehicles, coordination of LWO with the ICR Institute, SAU. Yes, sir, it is over. Thank you, sir. So it's over, sir. Thank you so much for your patient hearing. Thank you very much, Sushil sir. But take too much time regarding, but this topic is very important for us now. So thank you very much for your guidance and supporting us to deliver the good lecture. Thank you very much again. I'm inviting Dr. Bhagirath Chaudhary. Bhagirath Chaudhary is the founder director of South Asia Biotechnology Center, New Delhi, and he's also the board of member of Agriculture and Processed Food Industry Export Development Authority, APIDA, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. He have given a lot of experience in agriculture also. So I am cordially invited Dr. Bhagirath Chaudhary. On the topic is the innovative strategies to management of the desert locust. Please, Dr. Bhagirath Chaudhary. Thank you and good afternoon. Balodha ji, can you hear me? Yes, sir. Thank you so much. So, सबसे पहले तो मैं माननीय डॉक्टर जे संधू साहब का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का आज अवसर दिया है. Thank you, Dr. Sandhu, for this opportunity. You know, we all know Dr. Sandhu is an accomplished scientist, and I can tell you that I have seen him as an able science administrator who have successfully spearheaded crop science division of ICAR in the past. And he's one of the most outperforming agriculture commissioner of Government of India in the past. I have had special privilege to work with him for many years in New Delhi. So I want to really again thank Dr. Sandhu for this opportunity to talk to my own people in Rajasthan, because I actually hail from a small hamlet, Dudiyon Ki Dhani, in Bilada Tehsil of Jodhpur district of Rajasthan. मैं इस अवसर पर राजस्थान के माननीय कृषि मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जिनकी देखरेख में
लोकस्ट के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए राजस्थान में स्थित सभी विश्वविद्यालयों, आईसीआर के विभिन्न संस्थानों तथा कृषि विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम के माध्यम से एकजुट कर लोकस्ट नियंत्रण करने का जो ये आह्वान किया है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी के साथ में थोड़ा इंटरेक्शन रहा है 2012-13 में, जब वो यहाँ भारत सरकार में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उस टाइम उनके माध्यम से और डॉक्टर संधू साहब की हेल्प से हमने बहुत कोशिश की थी कि राजस्थान को बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया की स्थापना राजस्थान में की जाए। हमने बहुत कोशिश की, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस टाइम हमारा बहुत सहयोग किया था, जो बॉरलॉग इंस्टीट्यूट आज लुधियाना में स्थित है। इसके साथ साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के आयुक्त, आई थिंक मल्होत्रा इज हियर बिकॉज हिज नेम इज लिस्टेड इन द प्रोग्राम, राजस्थान के कृषि सचिव श्री नरेश पाल गंगवार जी, राजस्थान के कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जॉइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एस.के. सिंह जी, थैंक यू दैट यू आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम, एंड राजस्थान स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय। एंड मैं उनका नाम इसलिए यहाँ पे लेना अति आवश्यक समझता हूँ क्योंकि डॉक्टर एन.एस. राठौड़ सर हैं जो मेरे टीचर रहे हैं, और बी.आर. चौधरी जी है जिनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर मेरी फैमिली आज रह रही है। इसके साथ साथ प्रोफेसर आर.पी. सिंह साहब, डी.सी. जोशी जी, डॉक्टर एच.सी. शर्मा सर, डॉक्टर सुशील सर, और आईसीआर के निदेशक डॉक्टर ओ.पी. यादव जी, डॉक्टर पी.एल. सरोज जी, डॉक्टर बत्ता वत्सलम जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारी गणों और किसान भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसकी स्थापना मैंने दिल्ली में की है, जो कि एक गैर सरकारी संस्थान है, और हमने आईपीएम आधारित क्रॉप हेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए लाखों कृषकों के साथ पिछले 5-7 साल में काम किया है। इन लास्ट 5 years we have been successful in dealing with the threat of pink bollworm. It is a very big problem of pest in cotton Vidarbha region of Maharashtra, and last 2 years we have been able to rescue more than 5 lakh farmers from the onslaught of invasive fall armyworm. This particular pest that actually came in India in 2018 is becoming a very big threat for the maize grower in southern Rajasthan. And you know, we had an opportunity to work with Maharana Pratap Agriculture University, which is my alma mater, and I want to thank Dr. N.S. Rathod and the State Agriculture Department last year. And we trained more than hundreds of farmers, distributed them pheromone traps, lures, PPE kit, and you know, advised them how to actually implement the IPM-based package of practices to manage the menace of fall armyworm. You know, based on these field experiences, we would like to today delve into critical strategy for effective management of desert locust. And since Sushil and Dr. Sarmaji has given a broader perspective, but I would like to actually share with you some very critical areas that we have seen and witnessed. Some of these... just sorry for interruption. Please just speak in English, Hindi also. हाँ, मैं आप दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा। तो कुछ रेकमेंडेशन हमने, और डॉक्टर जीटी गुजर जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है लोकस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली ऑन R&D, पेस्ट डायनामिक्स, और जो रिसर्चेबल इश्यू है डॉक्टर शर्मा जी ने भी हाईलाइट किए हैं। इन इश्यूज को हमने, आईसीआर ने लोकस्ट वेबिनार एक किया था 30 मई 2020 को, तो उसमें हमने शेयर किए थे। लेकिन आज के प्रोग्राम में, in today's webinar, I think I would like to really discuss something that is practical and that is based on the observations and the feedback that I have been receiving from field officers that I am in touch with of the Rajasthan government. So we would like to discuss different innovative management approaches to this transboundary pest. Since Sushil has spoken about the LWO, but before I really go to the main key issues, I just want to also say something about LWO. You know, although the LWO Jodhpur was established almost 70 years ago, which is under the Government of India's Directorate of Plant Protection and Quarantine. And subsequently, you know, they have this FSIL at Bikaner, and as Sushil said, you know, there is a paraphernalia of locust circle officers in each district, but they are restricted to be in only the districts that fall under the jurisdiction of scheduled desert area. And this is important, very important point, because
what about the other districts, and why the circle officers are not there in the other districts where the locust has been moving, in the state of Rajasthan. This is the very big questions that I just want to pose to the state, to the LWO. The other thing that I want to share with the August gathering here is that the LWO operations is solely dependent on the secondary information and the advisories from the FAO. So there's the second really big question mark. Can't we use the information that we generated through LWO, which we feed into the system of FAO? Can't we actually use that information and develop proactive strategic, planning for the control of locust, so that our state agriculture department is proactively prepared to deal with this kind of pest in the future. Now, I believe Dr. K.L. Gujar, who would make presentation after my talk, he would, of course, share some of the LWO activity and update the current status. However, nevertheless, the point that I want to raise here is that the recent locust swarm, occurring in unusual winter season of 2019. Now, some people are saying that it came in sometime in December, but we all know that even in September, October last year, we had difficulties to manage the swarms of locust, followed by multiple locust swarms that are flocking in April to June 2020. And this actually really calls for an unprecedented wake-up call for all of us. And I believe, इसीलिए माननीय कृषि मंत्री जी ने और राजस्थान सरकार के कृषि सचिव एंड कमिश्नर साहब और डॉक्टर संधू साहब ने आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया है. Now, we know that the desert locust is an invasive. Dr. Sushil has just now described. The frequency and intensity of invasion of this pest in swarm is unpredictable, that we know. Now, in the past, and the point that I want to highlight, please take note of these points. In the past, we had a comprehensible pattern of invasion, mostly during the Kharif seasons. And the locust swarm have not been reported round the year as well as in the consecutive years. So these are the 3 points that we are aware about, that, this locust actually, it doesn't stay in the state of Rajasthan throughout the year. It doesn't appear in the Rabi season. It was the phenomena that used to occur only in the Kharif. However, during the recent invasion, all of us have observed a series of unusual patterns of the locust invasion. And here, I would like to highlight some of these patterns and suggest systematic and appropriate management and control strategy. मैं माननीय मंत्री जी को और कृषि सचिव साहब को ये जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर हमें बड़े अनयूजुअल पैटर्न देखने को मिले हैं लोकस्ट के बारे में राजस्थान के अंदर, और ये पैटर्न को समझना डिपार्टमेंट की, जो कृषि डिपार्टमेंट की जो हमारी मशीनरी है, वो सिर्फ LWO पे डिपेंडेंट न रहे और साथ इसका कंट्रोल करने में मदद करे, क्योंकि किसानों को जो नुकसान रिपोर्ट हो रहा है वो बहुत लार्ज स्केल में नुकसान हो रहा है, और हमें किसी भी हालत में किसानों को होने वाले नुकसान से, लोकस्ट से होने वाले नुकसान से हमें बचाना है. तो जो 3 पैटर्न है जिनका मैं आज आपके साथ में जो डिस्कस करना चाहता हूं, उसमें जो पहला पैटर्न हमने नोटिस किया है वो ये है कि देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ ट्रांसबाउंडरी इंकर्जन ऑफ मल्टीपल लोकस्ट स्वार्म्स over a relatively longer period of time. So if you really see from mid of 2019 until now, and Dr. Sushil has confirmed this, there are reports of over thousands of swarms invading the fragile ecosystem of Rajasthan, Western Rajasthan. This is a very unusual that you have seen a longer period in which these swarms are invading in different seasons. Dr. Sandhu Saab mentioned that they seen during the 0-degree temperature, and now they are seeing when there is 45-degree temperature. So how do we deal with this pattern? To deal with this pattern, I think in order to control incursion of these locust swarms, the government of India through LWO must ensure that the larger portion of these swarms is controlled by aerial spray with high knockdown chemicals. And I take all the responsibility when I say this, that we need to really control them at the point of entry. And that should be, we ensure that more than 80% or more than 90% of these larger swarms are knocked down with those chemicals that are really
very effective against these pests. Now, the aerial spray has to be undertaken, and this is the point that Agriculture Secretary should really take note of. I think we are now contemplating means to use aerial spray, and that's where I want to use this point here, that the aerial spray has to be undertaken only in the border area with minimal human and animal habitat. Note down, malathion is ecotoxic. It can be toxic to human, animal, and microflora and fauna. But we can't take risks, so we have to go for the aerial spray. But the spray has to be undertaken only in the border area with minimal human and animal habitat. This can be achieved only if the Government of India, LWO, gather timely information and share it with the State Agriculture Department. Now, in order to get timely information and early warning incursion from neighboring countries, the State Agriculture Department role become paramount. And here's the suggestion that I want to give it to LWO and Bharat Sarkar ko bhi main ye suggestion dena chahta hu. I suggest that the central government must appoint Director Agriculture or a senior plant protection officer from the state of Rajasthan as a member of the team of LWO that take part in the FAO Commission for controlling the desert locust in Southwest Asia. This is absolutely critical to reduce the flow of information from FAO to Bharat Sarkar, LWO, and then to the state of Rajasthan. This will ensure timely information is made available to the State Department of Agriculture for quick mobilization of state functionaries located in different district and taluka of Rajasthan. So this was the first pattern and the suggestions that I wanted to share with the state of Rajasthan. The second pattern, which is very important to be noted, because today we have a galaxy of scientists and the State Department people here. The second pattern is that there has been a noticeable change in the swarming behavior of locust desert. And when I say we have noticed change in the swarming behavior, what does it mean? It means that the bigger swarms are disintegrated into multiple smaller swarms, and which then takes different flight paths and land at different places. And now this, you all would agree that, we see these bigger swarms coming up, but because of whatever the traditional methods that farmers are using when they see the swarms sitting in their field, they use acoustics or whatever drum beating that they do. And when we do the pesticide spray, we see a disintegration of these swarms into smaller swarms. Now, the disintegration into a smaller swarm is posing the biggest threat to agriculture, and therefore their management has become a very big challenge in last few weeks that we have seen. Therefore, the understanding the reason of disintegration into smaller swarm and tracking multiple paths require new ways and means of management of locust. In last few weeks, we have seen multiple smaller locust swarms flocking in different districts of Rajasthan and other states. And as I speak, अभी मुझे जानकारी मिली है कि इवन दिल्ली के गुड़गांव के अंदर एक स्मॉलर स्वाम्स को फ्यू मिनट्स पहले उसको आज यहाँ दिल्ली के गुड़गांव में भी देखा गया है. सो इन छोटे छोटे स्वाम्स को हम कैसे मैनेज करें? इसके लिए therefore we need to put in place a real-time forewarning strategy to manage these smaller swarms. How do we do it? So the current contingency plan for desert locust, control that involve whatever the officers that we have just now, shared with the audience in this is limited. However, in view of the frequency and intensity of smaller swarms of locust that taking different flight path, it limit the ability of ground staff to control them at different landing places. क्या हो रहा है? बड़े स्वाम्स को हम डिसलोकेट कर रहे हैं, छोटे छोटे स्वाम्स बन रहे हैं और वो हवा के साथ डिफरेंट रूट्स ले रहे हैं और डिफरेंट जगह के ऊपर उनका लैंडिंग हो रहा है. So what's happening is that we have a lack of intelligence of movement of these smaller locust swarms, and that is becoming detrimental to the efforts that we are making. Hence, I believe that the alertness to track the path of the smaller swarm locust and promptness to control them as they settle during evening has become necessity. Therefore, I propose, मैं राजस्थान सरकार को ये propose करता हूँ कि राजस्थान सरकार should set up a dedicated hotline WhatsApp number. And all of you actually are receiving some of the WhatsApp pictures and videos from people in your network
these are primarily coming after the swarms has either landed or it's being already, flew through a particular region. So state government can set up a hotline WhatsApp number. They can popularize it among farming community, and then they can crowdsource the exact location of these locust swarms while they move and settle for the quick implementation of control measures. I think यहाँ पे ये बात समझना होगा कि involvement of different line departments, and that's why I'm making a call to the state government that over dependence on LWO is not able to help us achieve the desirable goal. So I would suggest that the state of Rajasthan should involve line departments, Gram Sevak, Sarpanch and farming community to gather these real-time information about locust swarms so that the quick relay information to those who are responsible for implementation of control measure in different locations. So this is the point that I wanted to share. The another way that I talked to ICR, and I want to share this one with the Agriculture Secretary Sir and Dr. Sandhu Sir and others, that Agriculture Department, ICR, Kajri and SAUs, they can actually set up locust crowdsourcing platform to mobilize individual. And here, this information that the mechanism that I just suggested need to be integrated with the local meteorological data so that the real-time information about intended flight path can be made available to local authorities. So this is the second critical patterns that we have noticed, which I thought I would like to share with you. And this is all really new information that we need to take in considerations while हम ये कोशिश करें कि लोकस्ट से हम निजात किसानों को दिला सकें. थर्ड पैटर्न जिसके बारे में मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने आपसे बात की है, बट मैं इसके बारे में कुछ इस संबंध में बारे में कुछ आपसे जानकारी शेयर करना चाहता हूँ. वो ये है कि देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ लोकलाइज्ड ब्रीडिंग ऑफ डेजर्ट लोकस्ट इन बीकानेर एरिया ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. And this is very, very critical. We had if you really look at the June 1 to 15th locust bulletin, which is issued by LWO, this is I'm talking about this June 1 to 15th. LWO observed various stages of life cycle of desert locust, including the presence of immature, maturing, mature adult groups and swarms. Now this actually reconfirming the hypothesis that the locust might be reproducing locally in border areas, wherever they find and conducive breeding condition in Western Rajasthan. And this is a very serious matter. At any cost, we don't want this pest to become endemic. We don't want this pest to breed in any part of any territory of India, and therefore I think we need to really intensify. And I suggest that if this is the case, then we may have to increase our vigilance of breeding places, trace the solitary stage, chase the band of hopper, and deal with the enemy of farmer at very early stage of reproduction. This is what Dr. Sarma has also suggested, which reinforces our point that localized breeding should not happen at any cost in the state of Rajasthan. Therefore, the survey and surveillance of border area need to be mandatory for identification and restriction of breeding places. Now, I'll take only a few more minutes, and I would just want to share that the traditional method of pest control that we have all seen proves as inadequate in dealing with this invasive pest. While the trouble are compounded by increasing labor shortages, as Dr. Sandhu has mentioned, that COVID-19 is creating a lot more problem in rural areas. So in these circumstances, the novel technology, and I am the one person outside the system who have been actually working very hard with the Ministry of Civil Aviation, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare of the Government of India. And we ensured that the Government of India actually gives the permissions to use drones or UAVs that can help improve the speed and efficacy of pesticide application. Now, I also understand that there are limitations of use of this drone technology, but I think this can prove to be a very useful technology to deal with locust. As Dr. Sarma mentioned, that most of these actually locusts, they settle on tall trees in the night, and use of these drones can be very, very useful. However, the issue surrounding logistic cost, energy, and environmental impact is a very big bottleneck. Now, in the recent past, I understand that the DPPQ has deployed some drones at the headquarters of some district falling under the desert scheduled desert areas, and has also released standard operating protocols.
after SABC active intervention with different ministries. The problem here is that the MOCA has given a conditional approval to use drones only in the daytime, when these locusts are flying at the height where drones cannot fly. So it is very important that the state government take initiative and reach out to the Ministry of Civil Aviation, seeking permissions to use drones also in the night. Another problems that I find with the permission is that it is exclusively given. The permission is given only to the DPPQ. So that's where the larger participations of entrepreneurs is restricted. Now, here I suggest State Agriculture Ministry that you can reach out to MOA and try to get the approval in a decentralized manner, so that the district agriculture department at the local level, they can actually work in collaboration with entrepreneurs to avail the opportunity of MSME funding for buying the drones for the pesticide spray in the states. Now, finally, I'll just take very less time. I would like to urge SAUs to undertake, and this actually in line with Dr. Sharma and what Dr. Sharma has suggested, that is thorough scientific assessment of the effect of neem seed kernel extract on the locust. They need to be undertaken. When I was a student in early 90s in my village, we know that the locusts that used to come, they used to they were not being able to settle on neem trees, and they might have affected the leaves, but nimboli ko koi nahi khata tha. So there are also many reports that confirm the anti-feeding and the repelling effect of NSKE against the locust. As we know, neem is a lifeline of Rajasthan and available in abundance. So therefore, we from our organization propose to work in collaboration with Kajri, and I had an initial discussion with Dr. O.P. Yadav sir, who has been very kind to discuss this matter with me, to see if we can produce different neem concentration. And what is more important here is to production of neem concentration in ULB formulation. And right now, NSKE formulation in ULB is not available, because if we can produce ULB formulations, then we can use this ULB formulation of neem through drones, and then can use this for the spray of the locust, even in the area where there is a habitat. Yeah, I just want one more minute. So the neem formulation can be proactively sprayed on crop by farmer to repel and fend off the desert locust and significantly reduce crop losses. I would like to acknowledge that राजस्थान सरकार के कृषि विभाग से जुड़े फील्ड ऑफिसर ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। सीमित संसाधनों के होते हुए कृषि विभाग से संबंधित सभी फील्ड ऑफिसर जिन्होंने रात भर लोकस्ट को नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाई है, और इन फील्ड वॉरियर्स की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ये मैं मेरे दिल से उन लोगों को रियली कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे फील्ड ऑफिसर के टच में हूँ। इसके साथ राजस्थान सरकार के कृषि विभाग को ये निश्चित करना चाहिए कि संसाधनों की कमी ना हो और पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक एवं स्प्रे मशीनों को उन जिलों के समस्त पंचायत समितियों में उपलब्ध कराए जो कि डेजर्ट शेड्यूल एरिया में आती है। सरकार ये भी निश्चित करे कि कृषि विभाग से जुड़े जितने भी फील्ड ऑफिसर हैं जो कीटनाशकों का छिड़काव कंटिन्यूसली कर रहे हैं, आई थिंक उनका जो एक्सपोजर लेवल है वो पैनाथियन के साथ बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंश्योर कराएं कि वो प्रॉपर PPE किट का उपयोग करें जब वो ऐसे कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ मैं डॉक्टर संधू का अगेन आभारी हूं कि आज उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच for your patience hearing. Thank you, Bhagirath. Thank you very much for your valuable suggestions. We have incorporated them now. Thank you. Thank you. Next speaker, I invite Dr. K.L. Gujjar sir. Please take certain time constraint is there, only 5 or 7 minutes you have to finish your lecture. Dr. K.L. Gujjar sir is the Deputy Director, Locust Farming Organization, LWO. In India, the scheme Locust Control and Resource is responsible for control of desert locust and being implemented through organizations known as LWO. The LWO is established in 1939 and later the Directorate of Plant Production, Quarantine and Storage 1946.
The LW2 to monitor the control situation in secure desert area, SDA of Rajasthan and Gujarat. So I'm cordially invited Dr. KL Gujar sir. They have discussed the present and future outlook of the desert locust emergence in India, Rajasthan. Gujar sir. Hello. KL Gujar sir. Sir, I think he's not connected. Actually, next speaker is Dr. R. Swaminathan sir. Dr. Swaminathan sir is the Professor Emeritus ICR Scheme, Division of Entomology, MPUT Udaipur. Dr. Swaminathan is the former Dean, College of Agriculture, Udaipur. And Dr. Swaminathan has taken a lot of work on the taxonomy of different insects. So today we have discussed regarding the biology of desert locusts. The biology aspect is very long, sir, but I personal request to you, please take time, constraint is there. Please, Dr. Swaminathan, sir. Yeah. Good afternoon to all of you. Param Adarni ministers and honorable vice chancellors and the deans, directors and all the dignitaries who are attending this webinar. I am indeed thankful to Professor Sandhu Saab, vice chancellor of Jobner, for having me invited to attend this very, very important webinar. And I'm thankful to the organizers once again. I'd like to share my screen here. And is it visible? No, sir. Has it been? Has the share screen been put open? Sir, you have to click on present now option and just open the. I have clicked the present now option. Yeah, and just select your entire screen. Yeah. So I hope now it is. Yeah, I hope. Are you able to see it? Yeah. Sir. Yes, sir. I hope it's now visible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Well, as Dr. Baloda has already said that there's a time shortage, I have cut out most of the things and I'm coming directly to one point that there is a lot of confusion in the locust. You know, there's a lot of misidentifications also everywhere going. As I present here, as you see here, on the top left is the migratory locust. This is the solitary phase, and you can see the raised pronotum. Whereas on the right hand side, I'm showing all the three different, the immature and the mature arrays of the desert locust, which is right now present a serious problem over here. And on the left below, you can see the Bombay locust or the Indian locust, Patanga succinta, which is also a locust, although it has not created a problem recently. Now, identifying these insects is quite simple. You can see the immature adult and the mature adult. And just go on further. Now, the diagnostic features that we have developed here for easy identification by even a farmer who can see this is try to see the forewings
they are quite different, having a lot of spots. Then just turn it upside down, and on the ventral side, you can see the prosternal tubercle, which is present here. Then the mesosternal lobes, which are having an acute angle, and the tibial spines, which you see are white with a black tip. And one of the most important character is the subgenital plate, the jananang, jisko hum kehte hain, the genital upper part. You can see it has got a W shape. This is typical for cysticerca gregaria. This part can be identified by any person. This is the lateral view of the same jananang or the genitalia, male genitalia. Then this is how we have shown that by catching it in the hand, you can see the prosternal tubercle, or we can also call it as controllangote, which has got something like a knob-like structure here. Then coming to the Bombay locust, patanga, you can see the difference between the male and female. The male has got a pinkish base on the hind wing, whereas the female has got a transparent hind wing. This is the male and the female of the Patanga succinta, Bombay locust. How you identify this? You can see this has also got a prosternal tubercle here. The mesosternal lobes are also acute, and the tibial spines are also similar to what we saw in the desert locust. But the subgenital plate does not have any cutting or does not have any W shape or the notch. It is boat shape. You can see it is conical and it is boat shape. This is the subgenital plate, the ventral view and the lateral view, as you see here. Then coming to the migratory locust, which was a problem some time back. And one thing with this migratory locust is that it prefers the subhumid and more humid areas rather than the desert areas. And its infestation has been more in the Kashmir Valley, in Himachal Pradesh, and towards the other parts. And this we had collected. The solitary phase of the migratory locust is always present. Here in Banswara, in our area, Ghatol area, we had collected these specimens. They are always there. Then how to identify? They do not have a tubercle. As compared to the desert locust and the Bombay locust, they do not have the conchlangote or the tubercle on the thoracic part. Then the mesosternal lobes are curved. They are roundish, not square shape. They are roundish and there is a lot of space in between. Then the tibial spines are differently colored. And here again you can see the subgenital plate. It is complete and it's also V-shaped. It is conical in shape. And if you see the cerci, it is conical. Whereas in the desert locust, the cerci was, like your ice cream shape, with the cone ice cream, not like the cone ice cream, but the normal ice creams that they shape, a squarish shape. So this way we can see the difference in these locusts. Then I have made a comparison of both the locusts. See the desert locust on top. You can see the male genital subgenital plate, which has got a W shape. Whereas here, if you see here, this has got a conical shape, which is not anywhere cut. And the cerci is rectangular here, whereas the cerci is conical here. These are the common differences that we can see. Then another tree locust. Although it is called as a locust, but it has caused very little damage and it's more often not as active as the other locusts. Here you can see the hind wing. The tree locust hind wing has got a band, a black colored band on it, which we can identify from the desert locust. Otherwise, if you don't spread the wings, externally they may look very much like the desert locust. But when you spread the wings, you can see the difference. Here it is banded, whereas in the desert locust it is not banded. Then here again the subgenital plate is entirely different from the other ones, and the tibial spurs are pinkish with a black spot, not white and black. Here it has got a white, pink and a black colored tibial spines in the hind leg. You can see that difference. Then certain grasshoppers which are often confused. This common grasshopper Citta canthacris looks like a desert locust, and it is often confused by most of the people to desert locust. The reason is, see, you can see the genitalia is different, and here the hind leg tibia, as I show here, is red tip. It's not black tip. Then the prosternal tubercle, it is curved towards the thorax. It is extended and bent, reaching the mesothorax. It almost touches the mesothorax. It is not straight or conical as in the case of desert locust and the Bombay locust. It is curved towards the thorax. So this difference makes it very clear that it is not the desert locust. Any entomologist or even a common person can see this difference.
and identify them. Then another common pest, it is Aedelis abruptus, is a common grasshopper. This was sent to me for identification. People were afraid that it is a locust, but it is Aedelis abruptus. There is a cross, X cross marking on the pronotum, which is absent in the case of desert locust. And the wing pattern is also entirely different from that of a desert locust. So I wanted to show these important differences among the common grasshoppers and the desert locust. Then here is a picture to show you the A, B, C, D, E, F, and G. These are the dorsal views, A, B, C, D, and the E, F, and G are the lateral views. As you see here, a common person may get confused that desert locust has come. Here, except C and F, all are the desert locusts. There's a sexual dimorphism. There's a difference in the male and the females. As I have pointed out here, A is Cysticerca gregaria male, Cysticerca gregaria female B, C is Sirtacantha cristatarica. It has got a white band over here and dark brown portions on the thorax. And D is again Cysticerca gregaria the male. E is again Cysticerca gregaria female, the lateral side you can see. And this is F is Sirtacantha cristatarica, also known as the cotton grasshopper. Commonly, it is a grasshopper. It is not desert locust, and it is very much resembling it, but it differs a lot. Then Cysticerca gregaria the male G. So this is how you can see the differences in these grasshoppers and the locusts, which becomes usually a confusing part, and people send photographs and lots of specimens that it should be possibly locust kindly identified. Then we worked on desert locust with FSIL Bikaner in 1999. I had been adopted a student I had been given who was from Yemen. He was already working in locust, and we reared locust that time. We collected the solitary locust with the permission of the BSF and so many organizations. As Dr. Sushil has already mentioned, so many people were involved. The Locust Warning Organization, the field station people, and our university. At that time, MPVT and all were one university. During this period of July to September, we were in RAU only, in one university. Then here you can see the different phases. This is the solitary locust, green one on the lower side, left bottom. And here the right hand side, you see the black and yellow colored one is the gregarious phase. And in between the transient phase, which is another phase of the locust. And we reared them on, we studied the food utilization indices and provided 9 different foods. And as you see here, that mixed food, on mixed food, it developed from 3rd to 5th instar in a very short time of 17.5 days. Whereas it took 30.25 days on Erva persica, that is commonly known as बुई. बुई नामक जो खरपतवार है बुई, उस पर सबसे ज्यादा समय लगा इसको बनने में, तीसरे से लेके 5वें अवधि में इसको लोकस को rear होने में. Then we studied the different instars, 3rd instar, 4th instar, and 5th instar, how much time they take on different food. You see, on Cenchrus biflorus, that is Burach, which is commonly known as Burach, it takes 14 days. The 5th instar takes maximum time, and it took almost 14 days here. And on mixed food, even also, if you see, the 5th instar took maximum days, 8.25 days, whereas on the 3rd and 5th instar took about 4 to 4.5 days for developing it from 3rd to 4th and 4th to 5th instar. So this was a brief study that we had done. And we also observed that on Bui, the transient phase changes to solitary phase. On Burach, it can migrate, it can change from transient to gregarious. On cabbage, castor, and cluster bean, it can transfer from transient to solitary only. Whereas on groundnut, it is a preferred food and it will change to gregarious. On kanti, that is Tribulus terrestris, can change to gregarious phase. On pearl millet, it can change to solitary. And on mixed food, again, it was observed that the transient phase converts into gregarious phase from the 3rd instar to the 5th instar. So these are the points which we can observe, and food utilization studies that we had conducted gives us quite some understanding of the desert locust biology. Then we had tested at that time whatever chemicals were available. As we all know that neem gives a good control, and econeem was almost at par with chlorpyrifos. Chlorpyrifos was the standard, and you can see fenvalerate, econeem, and chlorpyrifos was at par. Whereas acephate was most toxic, 24 times, but it is banned nowadays. We cannot use it again. Decamethrin is 1.25 times more toxic than chlorpyrifos. So this was a brief study that we had done on the 5th instar locust in the laboratory, finding out the LC50 values and going in for all the tests. And based on the relative toxicity, I am presenting here that acephate was 24 times more toxic as compared to chlorpyrifos, whereas econeem and fenvalerate were almost at par with chlorpyrifos.
Then these are the different stages. The mature ones are yellow, and as you know that the male have a little less yellow color as compared to the females. Females are more yellow colored in the mature stage. That was what briefly I wanted to tell you about, although I had prepared a lot of slides about how the desert locust origin and all that had taken place. But because of the time shortage, I'm coming. Yeah, please. Yeah, because there are others also who have to give their presentation. I hope I've been able to clarify the differences between the different locusts, the 3 common locusts which are present here, although there are 10 locusts world over, and how to differentiate them. Thank you very much. Thank you once again for providing me an opportunity and to be with so many highly qualified dignitaries and observe them and study their work. Thank you very much, sir, for your valuable suggestions in the biology of the desert locust. Next, I invite Dr. Keshwan Subharamam, is the Principal Scientist Entomology, NBI Bangalore. Your entire screen, okay? The pioneer, NBI is the Pioneer Institute of Biological Control in India, and Dr. Subharam is the working on the chemical ecology approach for pest management, and today we have discussed the chemoecological approach for locust control. Please welcome. Yeah, thank you very much. I'm just sharing my presentation. One second, please. Is it visible? Yeah, visible. One second, please. Oh. One second, please. One second. Is the slides visible, please? Yeah, visible, sir. Honorable dignitaries, scientific colleagues, and dear friends, I would like to share the topic on chemoecological approaches in locust management. At the outset, I would like to thank the organizers for giving us to share our opportunity of the work that we have been doing and how we could mirror them in this area. Yeah, I won't take much time on the prelude because everybody knows about the problem of locust and the control measures that are in vogue or the use of chemical insecticides. But it's high time that we start thinking of the alternatives that are essential to have a clean and green management strategy. Much emphasis has been laid for monitoring, and not much has been really exploited as far as the ethology of this locust is concerned in our country. Some amount of physiological studies were conducted by Dr. Mehrotra and the team from IRI. But as far as the behavioral assay, that is the ethological aspect, very little studies has been done in our country. Now, if we have to focus on ethology, we have to depend on the chemoecological approaches. And the chemoecological approaches totally depend on the olfaction and the gustation. I'm not going to speak on gustation because it's another area by itself, but my topic would be centered around olfaction, which involves the use of semiochemicals. Now, if one has to talk about the semiochemicals, we cannot talk only about the pheromones. We may have to talk about the pheromones too. And when we look into the host of the desert locust or the migratory locust, and the time period of the nymphal period and the flying adults, which are going to feed on for a long time, you have an array of plants that is available for desert locusts. So this gives us an opportunity to look at it critically, that what is the compound that is attracting them, or what is the compound that could be less preferred. Now, my previous speakers, right from Dr. Sharma and Dr. Bakirad and Dr. Shushil, everybody was speaking about neem. Yes, neem was taken and sprayed and you didn't have any locusts coming and feeding on that. But what is the reason behind that, and what are the chemosensory organs that are being shut down so that the insect doesn't like to feed on that? This gives an opportunity for us to look into that angle. Now, if one has to study the olfaction of locusts, a thorough understanding of the antennae and the labial palp is essential. Now, my first focus would be on understanding the antennal morphology of this locust, and the insect has its antennal growth growing over a period of time. Almost 4-fold growth of this antennae happens right from the first instar to the adult.
More than that is that it's the interesting point of number of flagellar, that is annuli on the antennae, that is growing up over a period of time starting from 12 to 24. Interestingly, physiologically or morphologically, very less sexual dimorphism exists among these male and female of thing. Now, moving down from a macro picture of the antennal level, for an entomologist who is doing an electrophysiology, much interest is lying beyond that. He goes one step down and he sees in each annuli what are the types of sensilla that is present. And when we look into the different types of sensilla, one would enjoy or one would appreciate the forest of sensilla that is present, basiconic, coeloconic, keteke, and thing. And most interesting sensilla of interest to us as far as the electrophysiologists are concerned is this basiconic. You look into the number of pores that is available over here. The reason of this sensilla having more number of pores is that it should be able to pick up the pheromones or semiochemicals in depth. And each of this basiconic is innervated by around 50 neurons. In majority of the cases, you will have 2 or 3 neurons which are having receptors. But this is so beautifully tuned. That is why maybe this insect is a little bit difficult to crack as far as the pheromone is concerned. And you have other types of sensilla also doing their job. There are sensilla which is going to do only sort of thermo-hygro regulation system. And you have sensilla which are only doing the mechanoreceptors. So one has to understand thoroughly the nature of each sensilla and what type of job it is doing. And a step in depth. Now, this is where the interest is going to come. I said much of our interest is going to be on basiconic because it's going to have more of pheromone reception. You look into the number of sensilla that is coming up over a period of time during the growth of the insect. You have majority of them coming up over a period of time, but they are all concentrated on the middle portion of the segment of the antennae. Very interesting, because even if the upper portion gets damaged, you have more sensilla that is being concentrated on the middle segment of the antennae. That's going to keep the insect going for a longer time. And again, when you come into the face of these insects, especially gregarious or solitary nature, the ones which are solitary have to really search because they are all dispersed. They have to really come together, search their host for or their conspecific to come and mate. And when you clearly look into the types of sensilla differentiation between the solitary and gregarious phase, you have more number of sensilla active in the solitary phase than the gregarious phase. These are basic things which we can take up for developing management tools. Now, a quick grab of how the sensilla acts is that the pheromone or the odorant molecules in the atmosphere enters into the small pores, which I was showing in my previous slide. They go and hit into the neuron and cause electrical signal changes, which is transferred to the higher center of the brain so as to cause desirable action, behavioral action. Now, once the physiology is understood, now what are we going to do next? Now, we really have to understand what is the pheromone that is existing, or what are the different types of pheromones that are existing in the system, so that we could harvest them and use them for control or the management or the monitoring of this locust. So we have various systems that is in place, which have been available at the labs in India. So we use various systems called as thermal desorption system, wherein we try to collect the volatiles that is coming out from the insect or the host in which it feeds without much disturbance, and try to analyze what are the compounds that are present in them. Merely collecting of the compounds is of little use, because then you have to expose the compounds that you have collected to the electrophysiology rig, wherein you will be able to identify and pinpoint which is a compound that is present in a plant or an insect that is coming per se, and that is going to cause response in the insect antennae. So by running a tandem of a chemical detector, that is your gas chromatography along with electroantenography, you would be in a position to identify what are the different types of compounds to which the insect is or the locust is getting attracted or causing. Now, that is still at a larger level. Now, we have gone at a much lower level, wherein you could do the sensory physiology at the neuronal level or at the single cell level. Now, this is called as a single cell recording, where people have done recording on locust antennae. They have taken the electrode to the base of the sensillae and started recording from the neurons. So it will help us to pinpoint and find out what are the compounds which is causing response to these locusts. Now, with this backdrop, I'm going into the much larger picture. These are the techniques that are available at our hand and how we could approach the problem of pheromone and locust, Schistocerca gregaria. It is not easy as we think, because in other insects, either you have an aggregation pheromone or a sex pheromone. This insect is so complex as far as the semiochemical is concerned. You have a bouquet of pheromones that is coming out.
And when one looks into the pheromone types that is available in Schistocerca gregaria, yes, it is a heaven for an electrophysiologist and a chemical ecologist, but he has equally very many number of challenges, because right from the egg stage to the adult stage, you have very number of different types of pheromone operating. So you cannot pinpoint and tell that it is only one pheromone that's going to be used for the control or the management or the monitoring of this insect. You have oviposition aggregation pheromones, stimulating pheromones, maturation pheromones, and gregation pheromones. Now, to quickly look which is the pheromone which is that which I could harvest and I could use it for the maximum benefit. Looking into the types of pheromones that is available in Locust, yes, people have worked on 6 pheromones, and they found that they are able to attract their conspecific from a long distance. This works very well in the solitary phase. Chemicals like EZ26-nonodienol released from the females causes the electrophysiological response in the males. And interestingly, this compound is also present in some of the wheat plants in which this locust feeds as a minor compound. So did they take that and accumulate that and use that as a sort of a pheromone device for them to get aggregated or something like that? Is a worry to be checked out. Now, the moment we do all these sort of works, physiology, we need to do a behavioral response to check if that is really working out. One such compound that has been used in addition to this nanodienol was a pentanoic acid, which has really got an unpleasant odor and is also present in another plant, which was used for attracting this insect. And to brief the house, I would like to tell that all these experiments were conducted at the laboratory level and they have not gone into the field level. Now, another insect which the whole world is talking about as far as the locust chemical ecology is concerned is phenylestyl nitrate. They say that this is an aggregation pheromone. But when you look into it thoroughly, papers have come out that this is, in addition to doing aggregation pheromone, this is a pheromone released by the males, especially mature males, when the aggregation or when the gregarious nature comes and when they are in huge numbers, each male releases this pan, you call it as phenylestyl nitrate. And this phenylestyl nitrate is majorly called as anti-aphrodisiac pheromone, because what it does is when an active male comes in to a female, it releases this pan. The moment it releases the pan, it causes a sort of courtship inhibition behavior along the other males. This is a competing male. The moment the male releases this, it prevents the competing male from coming in contact with this female, and then it is safeguarding this female for a long period of time till the eggs are laid. Now, can we bet on this compound by trying to take this compound and spray and cause a sort of anti-courtship behavior in the insects, locust population? Yes, the system looks good, but if I have to go to my next slide, it gives me also the negatives. Now, this pan production, where does it take place? They have found that this phenylestyl nitrate is produced in the insect itself on their head and tergum, hind legs, and also the internal contents of the body of the locust also produces this. But is it really worthwhile that I could bank only on this chemical for developing a monitoring or a management or a confusion technique? I have another problem sitting over here. In locust, the phenylalanine, the cytochrome 450 gene acts as a catalysis in a gregarious phase. It converts the phenylalanine to a compound called as phenylacetoxamine, which in turn converts into PAN, which is anti-aphrodisiac pheromone. Now, this anti-aphrodisiac pheromone produced by the insect is also, if we are to think that we have to use it for control, we may be fooled, because it is also going to create problem for us, because it's going to send us a warning signals for these predaceous birds. Whereas in the case of solitary locusts, they are not able to produce this PAN, so they are eaten by the predatory birds. And studies have been conducted by taking the extracts of the solitary and gregarious phase. They found that the PAN is very high in the gregarious phase and very low in the solitary phase. Yes, naturally, the PAN has to be high because it has to produce anti-courtship pheromone, so there is no competition amongst themselves. Yes, there is also a ray of hope. You can find out other compounds which could be used in tandem with this, so that you could use it for the attracting or monitoring. Another pheromone that is available in Schistocerca is that it's an oviposition pheromone. Now, we cannot totally bank on this oviposition pheromone. A lot of ketones that has been separated from the egg froth has been termed as an aggregation oviposition pheromone. But there are studies also stating that even if you put the
aggregation or the oviposition pheromone in the soil, the locust would never come and lay its eggs over there. They depend on the moisture content over there because they have certain hygroreceptors in the oviposition which can clearly tell that there is no moisture. Even if there is a previous body parts or the oviposition pheromone, you do not lay your egg over here. So we need to try to blend the pheromone and the hygroreceptors together. Another Sir, thoda fast. Yes, please. Thoda fast kar dein, please. Hello. Sir, thoda fast kar dein, please. Time Yeah, I'm done. Yeah, the next is an aggregation pheromone. Yeah, here this is the best one which you can bank on because you can get various different types of pheromone and blend it to them and cause aggregation of these insects and then try to trap them. And there are various methods in which the pheromone is synthesized in the insect system, and we have to study in depth, try to marry the physiology along with the chemical ecology and try out the compounds that is being produced by the insect so that you can take that and use it for the pest management. Now, you cannot stop with the olfaction alone. Now, when you start talking about the neem that it's going to do good for the thing, you have to be a little bit systematic. Now, there are also chemical receptors over there. And when these chemical receptors are being activated by the compounds, it will help us to identify which is the compound which is going to cause a response in the palpi so that you could try and use this as an antifeedant. Now, if I have to conclude this, yes, locust emits an array of volatile. We have to do a stage-specific and phase-specific identification of the type of compound which you could use for synthesis and use it for monitoring and mass management, mass trapping. We need to do a lot of study because this is relatively novel in our country and nobody has done that. With this backdrop, I would like to acknowledge my parent organization, ICAR and DBT, for giving me an opportunity to dwell upon this area of research, though not on locust, at least on the electrophysiology and chemical ecology. Thank you, one and all. Thank you very much, sir, for nice presentation and give a good information to the house. Na? Thank you. Yeah. All the Vice Chancellors of the Rajasthan, Dr. N.S. Rathod, sir, please, अगर हैं तो वो अपने दो शब्द रिमार्क के तौर पर कहेंगे. डॉक्टर राठौड़ सर. डॉक्टर जोशी सर, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा. डॉक्टर आरपी सिंह जी, वाइस चांसलर एसकेएनयू बीकानेर. डॉक्टर बी.आर. चौधरी, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर. नमस्कार जी सर. अरे थैंक यू डॉक्टर बलोदा जी, माननीय कृषि मंत्री जी लालचंद कटारिया साहब, संधू साहब, राठौड़ साहब, माननीय कुलपति जी और अन्य कुलपति कोटा से हैं जो, और मैं सभी को सुन रहा था और संधू साहब ने बहुत ही अच्छा प्रयास करके इस वर्कशॉप को रखा. और मैं सोच रहा हूँ कि जो ये ज्वलंत समस्या है, पिछले रबी सीजन में भी काफी टिड्डी का अटैक पश्चिम राजस्थान में हुआ और किसानों को भारी नुकसान हुआ इससे. और अभी समर सीजन में जब क्रॉप नहीं थी तो भी प्लांटेशन वगैरह जो वेजिटेशन था उसको लगातार ये अटैक कर रही है. और कल ही जोधपुर जिले में 20 जगह छोटे छोटे जो है ना दल टिड्डियों के थे. और बड़ी समस्या आ रही है कि सर्दी के सीजन में जो 9-10 बजे जो स्वान उड़ रहा था, अभी 5 बजे ही फ्लाई हो जाता है. तो हमारे जो कृषि विभाग के जो साथी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो लगातार रात को काम कर रहे हैं इस कोविड कंडीशन में भी, और एक लगातार किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. और मैं विश्वास करता हूं कि जो इसकी फाइंडिंग आएगी वेबिनार की, वो काफी यूजफुल होगी और कृषि विश्वविद्यालय आपके साथ है. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Joshi sir. Thank you, sir, for your valuable suggestions. In panel discussion, I have invited Dr. O.P. Yadav, sir, Director Kajri, Jodhpur. Yadav, sir, please. Thank you very much. Am I audible now? Yes, sir. Let me sincerely thank at the outset Honorable Vice Chancellor and my great mentor, Dr. Sandhu, to really initiate these deliberations. And this was needed actually. And let me also say that almost 2 weeks back, we had a very detailed discussion at ICR. डॉक्टर चौधरी, आप हिंदी में बोले थोड़ा अच्छा लगेगा. ओके, कोशिश करते हैं. लगभग 2 सप्ताह पहले ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल ICR ने भी एक बहुत अच्छा वेबिनार करवाया था
और उसके अंदर भी लगभग 1100 के करीब पार्टिसिपेंट्स आए थे। आज भी लगभग 150 के करीब हैं और उसके अंदर भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ था। आज भी जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं वो वास्तव में बहुत ही अपडेटेड हैं और मंत्री जी का इस मीटिंग में होना इस बात को भी दिखाता है कि राजस्थान सरकार इस विषय के ऊपर बहुत ही गंभीर है और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ सुझाव माननीय वाइस चांसलर साहब और कृषि मंत्री को देना चाहूंगा। डॉक्टर सुशील ने बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है और बाकी प्रेजेंटेशंस जो दूसरे लोगों के हुए हैं वो भी बहुत शानदार रहे हैं और इससे मुख्यतः 3 चीजें निकल कर आ रही हैं कि हमें आगे आने वाले समय में मॉनिटरिंग कैसे करनी है, पेस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है क्या उसमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और उसका जो कंट्रोल एस्पेक्ट है उसके ऊपर हमें क्या कुछ नया करने की आवश्यकता है। भागीरथ चौधरी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। माननीय कृषि मंत्री साहब और माननीय कुलपति साहब, मॉनिटरिंग के अंदर देखिए हम सभी जानते हैं कि एक FAO का सिस्टम इट इज एग्जिस्टिंग इन प्लेस। जब वो सिस्टम होने के बावजूद भी अगर ये समस्या इतनी गंभीर बन के आई है तो एक चीज तो निश्चित रूप से सामने आती है कि जो हमारा सिस्टम जो है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है या उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा रोल टेक्नोलॉजी का तो होने वाला है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जब तक हम मॉनिटरिंग पंचायत के स्तर पर नहीं करेंगे और उसके लिए सबसे अहम बात ये रहेगी कि जो राजस्थान राज्य सरकार का जो रोल है उसके अंदर वो पंचायत को इसमें पार्टनर बनाए, जिसकी वजह से कोई भी अगर वहां पे नई जनरेशन लोकस्ट की डेवलप होती है तो इमीडिएटली टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो भागीरथ जी ने कहा कि वो डेडिकेटेड लाइन बनाने की आवश्यकता है, एक सुझाव तो मेरा इसके अंदर ये रहेगा। और दूसरा सर ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जैसे कोरोना हमारे साथ रहने वाला है उसी तरह से जैसे जिसे संकेत मिल रहे हैं ये लोकस्ट भी हमारे साथ एक लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि इसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ रहा है। रबी सीजन में जो वापिस चला जाता था रबी सीजन के अंदर ये यहाँ पे ठहर रहा है, तो इसका मतलब इसके बिहेवियर के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। उस चेंजेस को क्वांटिफाई करने के लिए माननीय कुलपति महोदय मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अंदर 5 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, 7 ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर बहुत से एक्सपर्ट हमारे पास एंटोमोलॉजिस्ट मौजूद हैं, दूसरे सब्जेक्ट के मौजूद हैं, आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लोग भी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि एक पहला स्टेप जो आज इस मीटिंग के माध्यम से और आपके रिकमेंडेशन के साथ माननीय कृषि मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, जो जा सकता है कि एक विशेष रूप से एक टीम बनाई जाए, एक नेटवर्क प्रोजेक्ट बनाया जाए जो कि इस पेस्ट की डायनेमिक्स में क्या चेंज हो गया है और क्या उसमें स्टडी करने की आवश्यकता है। उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, मैं सर आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि RKVY के तहत हम एक नेटवर्क प्रोजेक्ट बनाएं, 5 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सभी रिलेटेड क्रॉप बेस्ड और हॉर्टिकल्चर बेस्ड ICR इंस्टीट्यूट्स, ताकि एक नेटवर्क प्रोजेक्ट के माध्यम से इस पेस्ट में आगे क्या रिसर्च की जा सकती है वो उसमें आवश्यकता आज के दिन जरूरी है। तीसरा बिंदु कंट्रोल एस्पेक्ट का है। सर कंट्रोल एस्पेक्ट में भी हमें बहुत कुछ नया करने की आवश्यकता है, क्योंकि नए जो अभी 2-3 प्रेजेंटेशंस में ये बात बताई गई है, फेरोमोन्स की आवश्यकता है, इसके बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, उस चेंज को क्वांटिफाई करने के लिए नए मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या नए पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो क्या उनका रेजिडुअल इफेक्ट पहले से कम है। तो ये मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के ऊपर भी मुझे लगता है उस जो नेटवर्क प्रोजेक्ट में मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और साथ के अंदर मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर एक और डिस्कशन की आवश्यकता रहेगी सर, जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली रिसर्च एस्पेक्ट के ऊपर क्या काम करने की आवश्यकता है, और उसके अंदर हमें डॉक्टर सुशील की आवश्यकता पड़ेगी, LWO की आवश्यकता पड़ेगी, और जितने भी एंटोमोलॉजिस्ट हमारे राजस्थान स्टेट में हैं और खास करके क्रॉप साइंस डिवीजन ऑफ ICR उसको भी मद्देनजर रखते हुए
एक और हमें बिल्कुल एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। और आपने जो इसकी शुरुआत की है, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे ख्याल से इससे बेहतर शुरुआत और इससे पूरे ग्रुप के साथ इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। आपने मुझे अपना विचार साझा करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय कृषि मंत्री से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस और साथ में डॉक्टर ओम प्रकाश को मैं देख पा रहा हूं। मेरे ख्याल से आज के दिन हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम का जो बेसिकली सीवियरिटी है, उसको अगर हम इतने लाइटली ढंग से लेते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक उग्र समस्या कोरोना के साथ साथ एक किसान के लेवल पे भी होने वाली है। और हम सब की जिम्मेवारी इस टाइम पे बढ़ गई है। मैं एक बार फिर कुलपति महोदय साहब आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब। और आपके सारे सजेशंस हम मंत्री साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम एक बार फिर भी शेयर कर लेंगे। एट प्रेजेंट पोजीशन पे रियली राजस्थान के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी चीज आपने शेयर की है। इसमें आईसीआर से भी हम जो मदद ले पाएंगे वो लेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मंत्री महोदय के साथ हम बैठ के इसमें कोई बेस्ट चीज निकाल के देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आई विल इनवाइट डॉक्टर ओम प्रकाश सर, कमिश्नर एग्रीकल्चर। Om Prakash sir. Okay. I'm invited Dr. P.L. Saroj sir, Director CIH Bikaner. Dr. Saroj sir. Sir. Hello. I am audible. Yes sir, audible. Hello. Good afternoon to everybody. At the outset, I would like to put my gratitude to the chief guest, Manani Kataria Sahab, Honorable Vice Chancellor Dr. Sandhu Sahab, all experts, ladies and gentlemen. हम सभी लोकस्ट समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन विगत 1-2 वर्षों में ये समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि लोकस्ट के स्वार्म जो सीजनल हुआ करते थे, जो खरीफ सीजन में आया करते थे, अब इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है और वो समर, रेनी और विंटर सीजन में भी देखे जा रहे हैं। तो ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है। उससे ज्यादा भी ये समस्या इसलिए बढ़ गई है कि इनकी ब्रीडिंग साइकिल अब इंडिया में ही पूरी हो रही है, इसलिए ये समस्या विशेष रूप से गंभीर होती जा रही है। यहाँ मैं 2 बातों पर विशेष रूप से अपने विचार रखना चाहूंगा कि जो हमारा फोर वार्निंग सिस्टम है, हम एक्शन प्लान तब स्टार्ट करते हैं जब वो हमारे बाउंड्री पर पहुंच जाते हैं। हमें इस बात को सोचना है कि जिन कंट्री से, पर्टिकुलर डिजर्टिक कंट्री से ट्रांस बाउंड्री से उनका एंट्री होती है, लोकस्ट की एंट्री होती है, हमको अपने सिस्टम को एस्टेब्लिश उन कंट्री में करना चाहिए, उनकी कोलैबोरेशन से करना चाहिए कि जब वो माइग्रेशन करने के लिए रेडी हों, उसी समय इंडिया को ये पता हो जाना चाहिए कि इतने समय बाद इंडिया की बाउंड्री पर लोकस्ट पहुंच जाएंगे। तो हमको जो फोर वार्निंग सिस्टम है हमारा, उसको हमको और मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम जो कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे स्पीकर्स ने भी इस बात को कहा कि जो इस लोकस्ट की होस्ट प्रेफरेंस है, उसके लिए अब इस समय तक हम लोग काफी ये जान चुके हैं कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिन पर इनका इफेक्ट कम होता है। उदाहरण के लिए नीम, करंज, बकाइन, तुन, डेट पाम, लसोडा, कैटरपियर, एलोवेरा, आंवला, ऐसे तमाम प्लांट हैं जो प्रिफर्ड होस्ट नहीं है। हम पहले से ही हमारी कंट्री जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, आर्मी के साथ मिल करके उनकी ग्रीनरी बढ़ाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांटेशन कर रही है। लेकिन अगर उन प्लांटेशन की जगह पर जो ससेप्टेबल प्लांटेशंस हैं, उनकी जगह पर ऐसे होस्ट प्लांट लगाए जाएं जो कि लोकस्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, तो शायद ये ज्यादा अच्छा होगा। इस दिशा में भी हम लोगों को बॉर्डर एरियाज में हमारे ऐसे होस्ट प्लांट जो प्रिफर्ड नहीं है लोकस्ट के, उनकी नर्सरी तैयार करके उनके प्लांटेशन के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी बात, हम जिस विषय को मैकेनिकल जो हम लोग साउंड क्रिएट करते हैं या स्मोक क्रिएट करते हैं, फायर क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा लाइटली लिया है कि केमिकल मीन्स इज द ओनली वे।
हम लोगों को अगर बाउंड्री एरिया पर जो हमारे ट्रांस बाउंड्रीज हैं उनमें अगर हेवी मैकेनिकल डिवाइस स्टेब्लिश किए जाएं और हमको वार्निंग से पता रहे कि इस समय आने वाला है लोकस्ट, तो शायद मैकेनिकल डिवाइस भी उसमें ऐड करेगा। तो केमिकल के स्प्रे के साथ साथ हमको मैकेनिकल डिवाइस बाउंड्री पर हमको ज्यादा इंटेंसिफाई करने की जरूरत है, ना कि जब लोकस्ट अपने कंट्री में इंटर कर जाता है उसके बाद हम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे कि हमको जो है रिसर्च के साथ साथ हमको फोर वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना है, हमको बाउंड्री जो प्रिफर्ड होस्ट नहीं है उन बाउंड्री प्लांटेशन को करना है, और हमको मैकेनिकल डिवाइस को भी प्रेफरेंस देने की आवश्यकता है। तो ये 3 बातें मैं अपनी तरफ से कहना चाहता था। रिसर्च के साथ साथ इन बातों को भी करना चाहिए, और साथ में जो डॉक्टर यादव ने कहा हम सभी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज सब मिल करके, क्योंकि अब ये समस्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, इसलिए हमको एक नेटवर्क के प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, मैं कमिश्नर एग्रीकल्चर अवेलेबल। सर मैं इसे आप ही को बुला रहा था सर, प्लीज। ओके, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर और यहाँ पे उपस्थित सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सभी वैज्ञानिक गण और कृषि विभाग के अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीसी को वेबिनार को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए और सभी साइंटिस्ट को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और इस मुद्दे जो टिड्डी की समस्या है इसकी ग्रेविटी को आप लोगों ने समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ हमारी तरफ से आपसे जो एक्सपेक्टेशन है उस पर आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे जो एफर्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा। अभी तक लास्ट ईयर जो है करीबन 6 लाख हेक्टेयर एरिया में टिड्डी का प्रकोप हुआ था और काफ़ी हद तक हमने इसको वेस्टर्न राजस्थान में कंट्रोल कर दिया था। लेकिन इस बार जैसा कि आगे की प्रेजेंटेशन में बताया था कि जो ग्रीनरी, क्योंकि पाकिस्तान से जो लास्ट सीजन की ब्रीडिंग है उससे जो आई टिड्डी आई है, और क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी अवेलेबल नहीं थी उस वजह से काफ़ी आगे की तरफ बढ़ी और एमपी, महाराष्ट्र के कुछ पोर्शन और यूपी और बिहार तक टच करी है। लेकिन जो एफएओ का प्रेडिक्शन है कि जो अपना मानसून आएगा दे विल रिवर्ट बैक टू द डेजर्ट एरिया, जो क्योंकि ये डेजर्ट लोकस्ट है वहीं जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट के जो प्रेजेंट एफर्ट है उसमें जो सजेशंस आए कि हमारी प्लानिंग के तौर पे हमने इस साल काफी अच्छी प्लानिंग बनाई है। हमारा स्टेट का प्लान के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट का अपना लोकस्ट मैनेजमेंट प्लान है, उसमें हमने रिसोर्सेज की मैपिंग करी है, मैन पावर की मैपिंग करी है, जो मैन पावर शॉर्टेज था उसको फुलफिल किया है। करीबन 200 हमारी सर्वे की टीमें अवेलेबल है कि कहाँ पर मतलब लोकस्ट है, तो डेली उनका सर्वे होता है। हम आज की तारीख में 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर का यूज कर रहे हैं, जो उस पूरे प्रोसेस में फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पेस्टिसाइड दिया जा रहा है। एलसीओ की तरफ से मोर देन 50, आज की तारीख में 65 व्हीकल्स एलसीओ की तरफ से है, साथ में ड्रोन वगैरह का यूज भी हो रहा है, जो सभी प्रेजेंटेशन में आगे हम बताएंगे। अब हमारे जो प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं आज की तारीख में, उसके हमारा जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी तरफ से हमें यदि वो सॉल्यूशन मिलता है तो हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे उसको। फार्मर्स जैसे आज कह रहे हैं, आज की तारीख में फार्मर्स के सपोर्ट से रात को ऑलमोस्ट हमारा डेली ऑपरेशन जो है रात को 12-1 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 5-6 बजे तक चल रहा है, और फार्मर्स का है, कृषि विभाग के अधिकारी है, एलडब्ल्यूओ के अधिकारी है, सभी मिलके एंड जो जनप्रतिनिधि है उन सबके सपोर्ट से मेहनत हम पूरी कर रहे हैं। एंड जो बागीरा जी ने थोड़े बहुत पहले अपने प्रेजेंटेशन में भी ये बात कही है, लेकिन कुछ इश्यूज है जिन पे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हम थोड़ा सा उस पे आपसे सपोर्ट यदि मिलता है तो वो काफी यूजफुल होगा। इसमें पहला मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिहेवियरल चेंज ऑफ लोकस्ट। नॉर्मली जो लोकस्ट पे देखा जाता है वो अक्टूबर तक आज से पहले रिटर्न कर गया था। पहली बार ये हुआ कि लोकस्ट जो है 15 फरवरी तक यहाँ पे राजस्थान में रहा है। अब उसके अंदर में दिसंबर के अंदर में टेम्परेचर रात में 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और समर की जो पीक है उसमें 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 48-49 पे भी ये सर्वाइव कर रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये सर्वाइव कर रहा है। तो एक इस पे थोड़ा सा हमें रिसर्च करने की जरूरत है वास्तव में किस तरह के बिहेवियरल चेंज लोकस्ट के अंदर में आ रहे हैं और उस पर अपन क्या कर सकते हैं। सेकंड है कंट्रोल मेथड पे। कंट्रोल आज की तारीख में जितना भी कंट्रोल है वर्ल्ड ओवर, जो कंट्रोल है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन द पेस्टिसाइड, मेदर इट्स अ केमिकल पेस्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड। मोस्ट ऑफ द केसेज में हमारा केमिकल पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, और फार्मर्स के केस में ये हालत है कि वो सामने रिजल्ट देखना चाहते हैं, स्प्रे हुआ और टिड्डी मरी, ये चाहता है फार्मर। अब आज की तारीख में जो बायो पेस्टिसाइड है उसका रिजल्ट जो अपन नीम बेस्ड कर रहे हैं 7-8-10 दिन बेस्ड का बाद में आ रहा है, या जो फंगस की अपन बात कर रहे हैं
किसान ये कहता है कि साहब हमारे तो सामने आप डबल पेस्टिसाइड डाल दीजिए, लेकिन टिड्डी है वो स्प्रे होते ही मरनी चाहिए, नहीं होती है तो ये अपने आप में वो एक फार्मर्स का मतलब आपको क्या करना चाहिए, उनको ये लगता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारा पेस्टिसाइड खराब है, हमने घटिया क्वालिटी का पेस्टिसाइड खरीद के उनको दिया है, और इसी वजह से नहीं हम उनको ये कहते हैं कि आप 4 घंटे बाद देखिए आपकी टिड्डी का स्प्रे यहाँ हुआ है, 4 घंटे बाद आप जहाँ टिड्डी वहीं उसी के अंदर में कहीं पे रास्ते में आपको मरी हुई मिलेगी। वो कहता है कि नहीं साहब वो तो वहां वाले स्प्रे से मरी है, आपके यहाँ वाला तो पेस्टिसाइड ही खराब था। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड इज, एंड द सेकंड है कि केमिकल पेस्टिसाइड के जो डिसएडवांटेज है वो हम सभी जानते हैं। तो निवेदन मेरा इतना सा है, क्या हम ऐसे कुछ केमिकल पेस्टिसाइड हैं जो कि मतलब लेस टॉक्सिक हो, हम मतलब एटलीस्ट फॉर द ह्यूमन एंड द एनिमल एंड द बर्ड्स के लिए, या जिसकी हाफ लाइफ है वो कंपैरेटिवली कम हो ताकि जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाए। क्या हम बायो पेस्टिसाइड ऐसे डेवलप कर सकते हैं जो कि एज इफेक्टिव एज केमिकल पेस्टिसाइड, इस चीज पे हमें देखने की जरूरत है। सेकंड है क्या हम फिजिकल मेथड से ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसी रेडिएशन मेथड हो सकता है कि जिससे अपन इसको मार सकते हैं, या इसके जो जेनेटिकल पार्ट है क्या हम उसको जो है आपका उन रेस से क्या उस पर कोई इम्पैक्ट आ सकता है ताकि ब्रीडिंग पे कुछ कंट्रोल हो जाए। मेरा अपना मानना है कि ब्रीडिंग पे कंट्रोल करने की सख्त जरूरत है। जब तक अपन ब्रीडिंग पे कंट्रोल नहीं करेंगे, सारे मेथड जितने भी करते रहे अपन मारते रहेंगे, प्रोड्यूस होती रहेगी। ब्रीडिंग का मेरा जो मुझे लगता है, जैसे इन सारी चीजों में कहा, जब तक ये सॉलिटरी फेज में है तब तक हमारे लिए उतना कोई नुकसान नहीं है। जो ये ग्रेगरियस फेज में आती है हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ब्रीडिंग तभी शुरू होती है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसको सॉलिटरी से ग्रेगरियस फेज में जो इसको मोटिवेट करता है, जो फेरोमोन्स है चाहे जो भी रीजन है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसके ग्रेगरियस फेज को अपन कन्वर्ट करने से उसको रोक सकें। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब तक सॉलिटरी रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेगरियस जब होता है तभी ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कहा था कि अपने इसके पैर के पास में कुछ सेंसेशंस होते हैं जिससे ये मोटिवेट होती है तो ग्रेगरियस में कन्वर्ट होती है, क्या हम उस पर कुछ कर सकते हैं। सेकंड है कि क्या हम इसके जेनेटल पार्ट पे, सपोज ग्रेगरियस हो भी गया, क्या हम इसके जेनेटल पार्ट पे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसकी ब्रीडिंग को रोका जा सके। उस चीज पे भी वेदर मे बी द केमिकल, मे बी रेडिएशन, मे बी सम अदर मेथड, जो आप साइंटिस्ट हैं आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या हम उस चीज पे कुछ कर सकते हैं, उस पे हमें देखने की जरूरत है। तीसरा, जहां इनका एक रूट है, क्या ये पर्टिकुलर रूट को फॉलो कर रही है। हमने अपनी तरफ से मेरे जिले के सभी अधिकारियों को कहा है, हम मैपिंग करवा रहे हैं, जिले में ऑलमोस्ट एक सेट पैटर्न का रूट है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। एक गांव में इस साल भी 3 से 4 बार टिड्डी आ गई, पड़ोस वाले गांव में नहीं आई है, तो हम लोग वो उसको हमारी तरफ से करवा रहे हैं। जहां तक कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि हमें उस रूट को पहले फॉलो कर देना चाहिए, या किसी ने एक मैसेज देख रहा था जो कह रहा था राडार से अपन इसको ट्रेस कर सके। हमने इसमें जितनी भी एजेंसीज है जो सैटेलाइट बेस्ड काम कर रही है, 7-8 अच्छी एजेंसीज को बुला करके उनसे पूछा भी सही कि क्या हम इसको रूट को या जो मूव कर रही है मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ इतनी छोटी साइज के अंदर होने के कारण, जो लोकस्ट का साइज है वो इतना छोटा है कि वो उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट इफ देयर इज एनी टेक्नोलॉजी प्लीज सजेस्ट अस, हम उसका वेलकम करेंगे। इसके अलावा जैसे अभी क्रॉप्स की बात हो रही थी, प्रोफेसर पीएल सरोजी ने बताया था कि कुछ क्रॉप्स है जिसको पर्टिकुलरली लोकस्ट है वो पसंद नहीं करता है। हमारा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, फील्ड ऑब्जर्वेशन, नीम पे नहीं बैठती है तो नीम के पत्तों को नहीं खाती है। गंगानगर से फार्मर का मेरे पास फोन आया था कि एक में आपके पास में ऑलिव का पेड़ मतलब कि बागान है, उसके जस्ट पास में संतरे का है। 2 बार आई है, दोनों बार पास वाले संतरे वाले को अवॉइड किया, लेकिन ऑलिव वाले के ऊपर बैठी है। सो इसका मतलब है कि उनका एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस है। इवन हमने जो बाड़मेर जैसलमेर में देखा है, जब तक इनको आपका जो जीरा और इसबगोल मिला है तब तक उन्होंने सरसों और गेहूं पे अटैक नहीं किया है, और जब जीरा इसबगोल नहीं है तो सरसों पे किया है। खरीफ के अंदर में उन्होंने जब बाजरी मिली है तो उन्होंने ग्वार पे नहीं अटैक किया। दैट मीन्स दे आर हैविंग प्रेफरेंसेस। और मुझे लगता है जो सॉफ्ट पत्ती है वो उनकी प्रेफरेंस रहती है, जो बहुत ज्यादा कड़वी है वो उनकी प्रेफरेंसेज में नहीं है। तो क्या हम ऐसा, जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है, तो कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जो हम फार्मर को सजेस्ट कर सकते हैं। इस साल एफएओ ने हमें बताया है कि हाँ लोकस्ट का अटैक होगा, तो हम फार्मर को 1 साल के लिए उधर डाइवर्ट करके देखें कि हाँ आप इन क्रॉप्स की बजाय ये क्रॉप्स पे जाएं जो कि लोकस्ट की प्रिफरेबल क्रॉप्स नहीं है। तो साल भर के लिए अपन उधर डाइवर्ट हो सकता है। हो सकता है ये हमको जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो हम चाह रहे हैं, हो सकता है एक फोर्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मेथड भी हो जाए जो हम चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बट
लोकस्ट है वो क्या करना चाहिए आपको, अपन को हेल्प कर सकता है उस प्रोसेस में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारी तरफ से, मैं एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है कृषि विभाग की तरफ से आप लोगों के सामने निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो डिपार्टमेंट एक्चुअली प्रैक्टिकली फेस कर रहा है, हम लोग पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टीमें हमारी पूरी रात काम कर रही है। जहां तक उनको पीपी किट का भी एक इश्यू आया था बीच में, वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग। हम लोगों ने जल्दी मतलब फाइनेंस से हमने अप्रूवल करवा दिया और अगले 2-4 दिन के अंदर हम फंड भी डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे, तो वो कोई इश्यू नहीं रहेगा। जहां तक फंड के इश्यूज की बात कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट ने सफिशिएंट फंड अवेलेबल करवाया है। आज की तारीख में किसी भी तरह का कोई फंड का शॉर्टेज किसी भी लेवल पे नहीं है। इनफैक्ट हमने हर तरह के स्प्रेयर अलाउ करे हैं, तो उससे एक फायदा ये हुआ है कि जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेलेबल मतलब डिपेंडेंट था आज दिन तक, मतलब इंग्लैंड की कंपनी है जो कि स्प्रेयर प्रोवाइड करती थी। पंजाब में इसका है लोकल, इसका जो है स्प्रेयर का प्रोटोटाइप डेवलप हो गया और होपफुली वो जल्दी ही आने वाला है। तो वी विल नॉट बी डिपेंडेंट होनली ऑन द यूके बेस्ड कंपनी जिसपे पूरा वर्ल्ड आज डिपेंडेंट है। लोकली हमारे फार्मर्स ने अपने अपने जो है अलग अलग तरह के स्प्रेयर डेवलप किए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि यहीं पे जयपुर के पास में एक डेवलप हुआ है, एक ही स्प्रेयर से मतलब एक उससे 3 अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो पेस्टिसाइड, एक मतलब 3 नोजल है, 3 डायरेक्शन में वो पेस्टिसाइड स्प्रे एक साथ हो सकता है, तो कम टाइम में भी हमें वो ज्यादा स्प्रे कर सकते हैं। तो लोट ऑफ लोकल जो है फार्मर्स की तरफ से भी रिसर्च हो रहा है, जो आपका लोकल मैकेनिक्स है वो कर रहे हैं और इसमें आगे आ रहे हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो साइंटिफिक हैं और जो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि यदि हम उस पर आप लोगों से हमें हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली इस साल तो नहीं, लेकिन यदि जल्दी आएगा तो क्योंकि लंबा रहने वाला है, जो जिस तरह से अपन कोरोना कह रहे हैं कोरोना लंबा रहेगा, तो इसी तरह से लोकस्ट है लास्ट ईयर के लिए एक्सपीरियंस को देखा जाए तो लंबा रहेगा। इस बीच में यदि आपकी तरफ से कुछ इस तरह का रिसर्च होता है और यूजफुल है, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू वेरी मच सर। सभी लोग सुन रहे हैं सर आपके पॉइंट्स जो थे कंसर्न, उसके लिए हम जितना बेस्ट हम लोगों से हो पाएगा हम उतनी कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने ये एक वेबिनार आज ये आयोजित की कि जितना इनपुट हमारे पास आए डिफरेंट एजेंसीज से, उस पर हम कुछ ना कुछ करके आप लोगों को दें। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं देख रहा था हमारे राठौड़ साहब, वाइस चांसलर उदयपुर MPUT NS राठौड़ सर हैं। क्या बट बलौदा अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो किसी दूसरे को ये फिर ज्वाइन करा देंगे। हेलो, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हेलो, यस सर बोलिए। आई एम आल्सो इनवाइट डॉक्टर संधू सर अगेन ना। संधू सर, नहीं आप अभी 2-4 गेस्ट हमारे रह रहे हैं, उनको भी बुला लीजिए। सर कोई भी अगर हैं, मैं इनको शायद ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज
नहीं, हमारे जेपी सिंह जी हैं अपने प्लांट क्वारंटाइन से, प्लांट प्रोटेक्शन से, वो अगर कुछ अपना सुझाव रखना चाहें तो रख दें, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। हाँ सर, मेरी बात भी जेपी हुई सिंह थी। जी, जेपी सिंह जी ऑनलाइन है आप? अगर नहीं है तो जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। Yes, sir. SP Singh this side, sir. हाँ, प्लीज सर, सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पे ऑल एकेडमिक और रिसर्च पेरिफेरलिया को, सारी फ्रेटर्निटी को इस पे डिस्कशन के लिए और अपने ओपिनियन और जो भी ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं उसके लिए इनवाइट किया सर। कमिश्नर एग्रीकल्चर ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले 1.5 साल से जो मिलके एफर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में बताया सर। 2-3 पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाहूँगा सर। एक तो मुझे लगता है कि जो पिछला लोकस्ट आउटब्रेक जो 90s में आया था, उसके बाद लंबा ड्यूरेशन निकला है जिसमें कोई बड़ा लोकस्ट का इन्वेजन नहीं आया, और वर्ल्ड ओवर जो बड़े साइंटिफिक जो एडवांसमेंट्स हुए हैं और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुए हैं वो 90s और आफ्टर 2000 ज़्यादा हुए हैं सर, अपने डिफरेंट फील्ड में इंक्लूडिंग साइंस एंड एग्रीकल्चर। तो इस वजह से जो लोकस से रिलेटेड जो रिसर्च है और जो फर्दर एडवांसमेंट्स हैं उसमें थोड़ा अपने जो भी जो 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 लीडर्स हैं उनका फोकस थोड़ा सा हटा है, और हम अभी भी जो ट्रेडिशनल जो रिसर्च है और जो भी नॉलेज बैकबोन हमारी जो लोकस पे है, हम उसी पे ही बहुत सा फोकस कर रहे थे। लेकिन अब जैसा आप सबने भी माना कि लोकस जो है वो लंबे समय तक रुक सकता है, और फ्रॉम राजस्थान अप टू मोरक्को जो पूरे 15-17 कंट्रीज हैं जो लोकस के जो होम है, उसमें ये irrespective ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर एंड ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स से इसकी वजह से ये इसके लंबे समय तक अपनी दिक्कत रह सकती है। और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर, खासतौर से जो गल्फ कंट्रीज में जो पिछले 2 सालों में जो साइक्लोन्स आए हैं, जो अनटाइमली रेन्स हुई है, हैवी रेन्स हुई है, और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो उनमें ज़्यादा एक्सपांशन हुआ है, और उसकी वजह से जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है वो चारों तरफ प्लिफरेशन इसका ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से इंडिया भी को भी परेशानी हो रही है। बिग इन गवर्नमेंट हमारा रिक्वेस्ट, हमारी जो निवेदन है सर, उसमें जो रिसर्च फील्ड है उसमें जो कॉमन जो टेक्नोलॉजी है जो फार्मर लेवल पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं और जो पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल हो, और इस तरह से हम रखें कि वो लो कॉस्ट बेसिस पे और इजी टू अप्रोच और हम उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उस तरह का फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए। जो प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड हैं और जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स है उन पे अच्छा काम पिछले मैं देख रहा हूँ कि 5-6 महीने से वापस उस ट्रैक को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं सर। उस पे हम अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ जैसे हम लोग फिरोमोन ट्रैप के साथ लाइट ट्रैप का भी हम लोग रखते थे, और रेडिएशन टेक्नोलॉजी से कई तरह से हमने इंसेक्ट स्टेरिलाइजेशन पे भी कोई अच्छा काम हुआ है जो नॉक्सियस पेस्ट पे। ये अभी तक लोकस पे काम नहीं किया। हम अगर इस पे भी काम करें तो ये हम जो प्रेजेंट जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है उसमें हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्सअप कर सकते हैं। मैं इसके लिए एग्जांपल में देना चाहूँगा इलस्ट्रेशन में कि नाइट टाइम में अगर एक बड़े ट्री पे बहुत सी लोकस्ट अगर नाइट रूस्टिंग कर रही है, तो क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ हम केमिकल से उनको सारी जो लोकस्ट है उनको हम मार गिराएं? क्या हम कोई रेडिएशन टेक्नोलॉजी या फोटो बेस अगर हम लोग कुछ कर सकते हो जिसपे स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट का हम लोग इस तरह से यूज़ करें, स्टेलाइजेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं जब जिसपे हम लोग अगर लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करें
तो इस पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लोकस का मेन जो फील्ड है जहाँ ज़्यादा इन्वेजन होता है, अटैक होता है, वो एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं। तो इनमें इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें जो पिछले 2 साल से जिसने बहुत सिस्टमैटिक और बहुत प्लान्ड वे में और इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स यूज किए हैं कंपेयर टू नॉर्थ अफ्रीकन या गल्फ कंट्रीज के बजाय। और इन सब कंट्रीज में इंडिया अभी भी इंडिया ही एक ऐसा है जो नई टेक्नोलॉजी को भी उस तरह से इजाद भी कर सकता है, एफएओ को भी हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम बहुत अच्छे जो पाथ है उस पर हम कर सकते हैं। अगर यूरोप में, अमेरिका में ये लोकस उधर ज़्यादा होता तो कुछ और अच्छे अब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स भी होते और अच्छे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी होते, लेकिन लोकस इस पर्टिकुलर पैच का इन कंट्रीज का है जिसमें इंडिया लीडर के रूप में रह सकता है। और तो पिछले 25 सालों से 30 सालों से क्योंकि लोकस ज़्यादा आया नहीं, तो हम ट्रेडिशनल जितनी स्टडीज़ थी हम उन्हीं पे ही हम लोग अभी भी चल पा रहे हैं। तो हमें 2-3 चीज़ों पे हमें ट्रेंड सेट करना होगा जिसके बेसिस पे हम आगे लोकस के इंटीग्रेटेड कंट्रोल जो स्ट्रेटेजी है उस पर हम काम कर सकते हैं। हमने सभी यूनिवर्सिटीज़ को भी रिक्वेस्ट किया है कि हम मिलके अगर अच्छा काम कर सकते हो, और हमारे जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं उनमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकती है। टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट्स है उनमें कोई लिमिटेशन है हो सकती है यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन एक्सटेंशन का नेटवर्क हमारा इतना अच्छा है कि हम उसको अभी बहुत अच्छा काम में ले तो गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे टेंडम में हम लोग काम कर सकते हैं। रिसर्च में लो कॉस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो नए रिसर्च एडवांसमेंट्स का वो हम कर सकते हैं। इसमें ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी थ्रू फंडिंग इन अप्रोप्रिएट स्कीम्स हम बिल्कुल मदद करेंगे। नए साइंटिस्ट हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, आईसीआर में यादव साहब बहुत अच्छा हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो मिलके और हम ये पूरा जो हमारा फ्रेटर्निटी है एग्रीकल्चर की स्टेट में, वी ऑल आर कमिटेड फॉर द फार्मर्स। सो हम ज़्यादा से अच्छा ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, वी शुड वर्क फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। इतने अच्छा आज प्लेटफॉर्म के बारे में संधू साहब ने सोचा, और मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इसको प्लान करने में और इसका ट्रेंड और बहुत अच्छी तरीके से इसको हम किस तरह से इसके रिजल्ट्स को ले सकते हैं इसके बारे में उन्होंने विजन दिया। थैंक यू सर। Thank you very much, Saspi, for your valuable suggestions. And on the behalf of the university, we have considered all the points those we have to discuss here. Thank you very much. Sir, let me give 5 minutes. Sir, please. तो सबसे पहले आज की ये इस मीटिंग में हमारे माननीय मंत्री जी आए, उन्होंने हमें अपना दिशा निर्देश दिए और हमें इस समस्या से अवगत कराया। तो जरूर हम जितने भी आज प्रेजेंटेशन हुए हैं उससे बहुत कुछ हम एक स्ट्रेटजी के तरह से प्लान कर सकते हैं, और उस स्ट्रेटजी को बनाकर हम जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे ओम प्रकाश जी एग्रीकल्चर कमिश्नर ने बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें जानकारी दी, उसको हम समावेश करते हुए कैसे इसको आगे कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम हमारे पास जो इंसेक्ट आता है एडल्ट स्टेज में, और उस स्टेज पर हमें मैनेज करना है, तो वो डिफिकल्ट स्टेज है और इस पर संघर्ष करने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर जादू जी ने कहा कि एक नेटवर्क प्रोजेक्ट, अभी मैं आपको बता दूं, एसपी सिंह जी सुन रहे होंगे, हमारे पास ऐसा कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई इस पे काम कर रहा हो, और हम अभी क्योंकि जॉबनरी आ गया था तो हमने यहाँ पकड़ के अब उनको कैच कर लिया, तो उस पर कुछ स्टडी हम शुरू कर दिए हैं अपने लेवल पर। और कल मैं आपको बताऊं कि एक नॉन कन्वेंशनल तरीका हमने अपना कर कि उसको वैक्यूम क्लीनर से अगर हम वैक्यूम से उनको खींच रहे हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट इकट्ठे करने में हम कामयाब हुए। जितने भी आपके फायर ब्रिगेड हैं, अगर हम जितना इंसेक्टिसाइड उस पर डाल रहे हैं, अगर कोई ऐसा हम मैकेनिज्म प्रेशर से उनको खींच पाए, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये सब देखने की बातें हैं, करने की बातें हैं और इसको आगे बढ़ाने की बातें हैं। और ट्रायल के तौर पर एक वीडियो मैंने कमिश्नर साहब को भेजा, सुनेंगे उसको,
तो उस दिशा में बढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपको हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह से ये एक रेगुलर टेस्ट होता जा रहा है, पहले होगा कि साल में एक आध बार हुआ तो हम भी सोचा कि चलो इसको ड्रम बजाकर ताली बजाकर हमने भगा दिया, पर लेकिन अब हमें इस पर सीरियसली एक स्टडी के तौर पर जो रेमिनेंट पॉपुलेशन रह जाती है वो कैसे हमारे यहाँ बिहेव करेगी, उसके बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, उसके ब्रीडिंग में चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर रहकर वो कैसे इस पूरे सिस्टम को के साथ एक्लेमेटाइज ना हो जाए, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर मॉनिटरिंग हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लगातार सर्वे होना चाहिए। जैसा सुझाव है कि पंचायत लेवल पर भी लोगों को जानकारी दी जाए, अगर कहीं आता है तो तुरंत जो है हमारा एक कंट्रोल रूम और जो हमारा एक रूम हो जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आए कि जहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ सीजन में कहीं दिख रही है या किसी क्रॉप पर आ रही है, तो उस तरह से। और क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया में रहे कुछ जैसा ओम प्रकाश जी ने सुझाव दिया है, हमें कुछ अल्टरनेटिव वे में सोचना पड़ेगा, कौन कौन सी क्रॉप वो उसकी प्रेफरेबल है, कौन कौन सी नहीं है, तो उसका अवॉइडेंस कैसे कर सके, वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है। पर लेकिन जिन जिन क्रॉप को वो खाती नहीं है, क्या उसके नीम का बारे में तो हमें जानकारी है, पर लेकिन जैसे डॉक्टर सरोज ने बताया और भी क्रॉप हैं उनमें कौन से केमिकल है या कुछ है, उसको एक्सट्रैक्शन करके किसके कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आज की जो मीटिंग में और वो हमें सुनने को मिली, और हमारा उसमें जो भी स्टडी हुई है उनको फेरोमोन ट्रैपिंग हम बहुत सारे जैसे हेलियोथ्रिप्स को कैप्चर करने में कामयाब हुए, तो लेकिन यहाँ पर अभी ये इंसेक्ट इतना ज्यादा नहीं आता था, लेकिन फेरोमोन जो स्टडीज भी हमें कुछ करने का जरूरत है। इसलिए NBIR बेंगलोर को हमने इनवाइट किया, उनकी क्या स्टडी है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी एस्पेक्ट पर स्टडीज होना और उससे एक स्टडी बनाकर चलना पड़ेगा, तभी हम इस पूरे जो समस्या है उसको कामयाब हो पाएंगे। तो डेफिनेटली वेरियस लेवल पर हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाकर उसकी प्लानिंग एक साल से पूर्व में, और जैसे भी फोरकास्ट पीछे से आती है हमारा फोरकास्टिंग अपना एक सिस्टम होना चाहिए। हम ना कि WLO पर भी हम बैठकर पूरा निर्भर हो जाएं, हम कुछ ना कुछ हमारे कंट्रोल रूम हमारे कुछ उस तरह का सिस्टम स्टेट में हो सके, क्योंकि हम इसको रोकना है ताकि अगर दूसरे स्टेट में ना जा पाए, तो इसलिए हम दूसरे स्टेट को भी बचा सकते हैं। इसलिए आज का जो वेबिनार हुआ सब लोगों ने आए और सब तरह के व्यूज आए, मैं बहुत सबका धन्यवादी हूँ कि इसको कंपाइल करके हम एक कहीं संग्रह करके और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट निकले उसको एक कंक्लूजन के तौर पर और एक स्ट्रांग स्ट्रेटजी के रूप में, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी के रूप में आपके पास आएंगे, और उसको साथ मिलकर हमारे वैज्ञानिक आपके साथ जोड़कर उस पर इंसेक्ट पे हम कैसे कंट्रोल कर पाए और इसके जो समस्या है इसको कम से कम मिनिमाइज कर पाए, उस दिशा में हम अपने प्रयास करेंगे। और पुनः सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम 3 घंटे से ये प्रोग्राम चल रहा है, सभी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, और पर्टिकुलरली जो हमारे वाइस चांसलर हैं उन्होंने इसमें शिरकत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Last, I invite Dr. A.K. Gupta, sir, Director Research and Dean Faculty Chairman, SKN Agriculture University, Jobner, for the vote of thanks. डॉक्टर महोदय एक मिनट, डॉक्टर S.C. शर्मा कुछ वो बोलना चाह रहे हैं। सर S.C. शर्मा, डॉक्टर S.C. शर्मा प्लीज। Dr. S.C. Sharma, sir, please. Dr. S.C. Sharma, sir. Sir, Director NBA II is also used. Director NBI here, Dr. Vasalam, sir. Okay, no problem. I invite Dr. A.K. Gupta, sir, Director Research and Dean Faculty Chairman, for vote of thanks. Dr. Gupta, sir, please. Dr. Vasalam, sir.
Good afternoon to all of you, sir. Thank you, Dr. Baloda, coordinator of the webinar, to giving Gupta ji, just a minute. Gupta ji, just a minute. Dr. Vatsavasalam, sir, Director NBII. Dr. Vatsavasalam, sir. Sir, please. Am I audible now? Sir. Respected Honorable Minister, Honorable Vice Chancellors, Honorable Director, Vice Chancellors of other universities, Directors of ICR institutes, and Commissioner of Agriculture. I am thankful to you for giving me an opportunity to share some researchable issues on this management of locust. Though locust, we usually think it is coming only up to western part of India and goes off. Recently, there were some media reports telling that locust has entered into Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. But of course, they are all not your desert locusts. It's all locust, so-called locusts, though they are not locusts. So the main aspect which we are contemplating here is the eco-friendly management of the locusts, especially the pheromones, which already my colleague Dr. Subhaharan has already mentioned. So we have different pheromones which are already known. One of the components which we are already looking for is the Z3-nonanol and octanol, which we are trying to synthesize. And with the collaboration with Dr. Sandhu Saab, we are proposing a project. And also the biological control, we were discussing about that. In that, main important is the Metarhizium anisoplea acridum, which already is known as the green mussels. So we are planning to have a collaborative project with the CABI International to find the get the culture, again quarantine, and use a formulation, a different kind of formulation, which can work in the desert areas. This already we have initiated. And of course, we don't have much of insect parasitides, though some egg parasitides are known. It is not of much use because they don't have any impact on the population. Again, we are also having a thinking, and we are also in collaboration with some excellent industries on the mechanical tractor mounted way of collection, and we can use the dead locust again as a fish feed or animal feed. We are trying to have that. So we are going with the support of our council. We are proceeding on these lines. I think with the cooperation of all these institutions, we will be able to come up, and maybe in the future, we will have some kind of technologies to control these locusts. Thank you. Thank you very much for all of you. Thank you very much. Thank you very much, sir. I invite Dr. A.K. Gupta, sir, please. सभी को नमस्कार। अब ये आज का वेबिनार समापन की ओर अग्रसर है। हम सबसे पहले हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने शुरू से ही इस संदर्भ में हमें प्रेरित किया और इस वेबिनार को आयोजित करने में हमारा उत्साहवर्धन किया। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री लालचंद कटारिया साहिब, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। स्पेशल गेस्ट श्री नरेश पाल गंगवार सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ऑनरेबल प्रोफेसर J.S. संधू सर, वाइस चांसलर SKNAU Jobner। Our most valued invited guest, Professor N.S. Rathod sir, Honorable Vice Chancellor MPUIT Udaipur, Professor D.C. Joshi sir, Honorable Vice Chancellor Agriculture University Kota, Professor R.P. Singh sir, Honorable Vice Chancellor SKRU Bikaner, Professor B.R. Chaudhary sir,
Honorable Vice Chancellor, Agriculture University, Jodhpur, Dr. O.P. Yadav sir, Director, ICR, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, Dr. S.K. Malhotra sir, Agriculture Commissioner, Government of India, respected Dr. P.L. Saroj sir, Director, ICR, Central Institute of Arid Horticulture, Bikaner, Dr. N. Bhaktwatsalam sir, Director, National Bureau of Agriculture Insect Research, Bengaluru, Dr. Om Prakash sir, Commissioner, Agriculture, Government of Rajasthan, our most valued speakers, respected Dr. H.C. Sharma sir, Dr. S.N. Sushil sir, Dr. Bhagirath sir, Dr. K.L. Gujar sir, though we could not connect today, Dr. R. Swaminathan sir, Dr. K. Subharan sir. It's my pride privilege to propose a vote of thanks on this webinar on management strategies for the desert locust. I, on behalf of Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, and the entire other supporting and organizing team, even special guests in the audience, let me call it fraternity of here together, and on my own behalf extend a very hearty vote of thanks to honorable chief guest, special guest, speakers, guests, and audience for gracing your important time, work, and sharing with us your views, opinions, and strategies today for management of this most notorious pest. Finally, I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to our most dynamic, creative, and supportive Vice Chancellor, Professor J.S. Sandhu sir, for the perfect guidance he has extended to all of us at this webinar. Thanks are also due to Dr. S.P. Singh Sahab, Joint Secretary, Government of Rajasthan. Once again, I wish to state that we are all most grateful to our chief guest, special guests, all the speakers, guests, and audience. We thank you for being with us. It has been a great pleasure. Thank you all very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। जैसे हमारे सर ने बताया, हम जितने हमसे बेस्ट हो पाएगा उतने करेंगे। तो इस सेमिनार से जुड़ने के लिए और लॉट ऑफ टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।